अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं तो बहाना मिल जाएगा। कामयाबी के कोई खुफिया राज नहीं, ये नतीजा है तैयारी का, मेहनत का और अपनी नाकामियों से सीखने का। मैंने ये सीखा कि मैंने जब भी मेहनत की, किस्मत मेरे करीब तर आती चली गई। एक कामयाब जंगजू एक औसत दर्जे का आम आदमी होता है जो लेजर की तरह मरकूज सोच रखता है। एक ही रास्ता किसी काम को करने का कि या तो उसे शुरू कर दिया जाए। मैंने कभी कामयाबी का ख्वाब नहीं देखा, बल्कि उस पर काम किया है। अगर तुम्हें यकीन है फिर तुम उसे पालोगे। कामयाबी के बीज को पसीने से आबियार किया जाता है, यही कामयाबी का राज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं मैं उस रब्बे जलील के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। तमाम हाजरीन को, नाजरीन को, सामीन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाज, वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हमें थोड़े से टेक्निकल चैलेंजेस का सामना है, but I'm trying to overcome. But let me introduce our Dean of Faculty, our Executive Director, on behalf of Worldwide Success Academy to kick off this, our festival. Please help me welcome Professor Terry Barthol. Welcome, everyone, for this special occasion, this 73rd celebration for Pakistani independence. This is a great day, and I'm very excited, very honored to be starting your kickoff here. I am, as Dr. Faz said, I am an executive director with the Worldwide Success Academy and co-founder and professor. In this time of pandemic, we
at Worldwide Success Academy, we offer seasoned coaches, seasoned mentors, and teaching. I hear a lot of stuff going on. Sorry about that. What WSA has to offer, we're offering it to you. So we, in post-pandemic, we're going to have shoulders for you all to lean on. So you'll be able to get on our website and on our Facebook page, and you can sign up or become one of our coaches, mentors, or teachers and ambassadors for our Worldwide Success Academy. Thank you so much for this honor, and I'm so happy to be here. Dr. Faz, if you're there, he is my mentor, my coach, and my teacher. He is also the vice president of Worldwide Success Academy. Thank you for this honor, and I hope to see you very soon. Thank you. Thank you, Professor. It's an honor for us to have you with us. And let me just set up, because I had to change the computer. So please bear with me if you see my picture is not coming that clear. Yeah, so, I see. I kept hearing, I know that we're having technical difficulties here. Yeah. So, in lieu of that, I do want to say that, yes, I am honored and so excited to be part of this celebration. Okay, thank you very much. Hopefully everybody can hear me now. Can we? Yeah, okay. I can hear you. I can hear you. Okay, so thank you very much, guys. Sorry, because somehow, technology I'm not good at. And that's why in COVID-19, at least I learned a little bit so I can speak with you guys. So hopefully I'm going to improve. I don't need too long of a COVID-19, but I need a little more time to learn technology. So bear with me. At this point, we have a full house of speakers. And I believe everybody is very keen to listen, all of you, because you all are thought leaders and you all have a lot to speak about. And it's an honor for me to have you all at the same platform and at the same time to speak. We have another thought leader, also a founder of Worldwide Success Academy with me. And she is the vice president of Worldwide Success Academy. She is a professor. She is a psychologist. She's a counselor. She's a certified speaker, coach, and trainer. So please help me welcome our vice president of Worldwide Success Academy to talk to you and to welcome you. Please welcome Professor Teresa Agostinelli. Okay. Are you there, Professor? Yes. Hello, everybody. How are you? It is quite an honor to be here with all of you today. And as many of you know, my name is Teresa Marie Agostinelli, and I am the vice president and a co-founder of Worldwide Success Academy. I have the privilege of putting you in touch with many of us to help you on your journey to success and to reach your full potential and live the life of your dreams. And I believe that you can. How do I know this? Because for almost 2 decades, I have been working with individuals, companies, organizations to help train their mindset for success. As a psychologist, as a professor at a local university, and as someone who is well trained in coaching, counseling, and consulting, I have been able to help so many people over the years, thousands of people,
to train their mindset, to help them to achieve success. And here at Worldwide Success Academy, we have faculty and trained staff to help you reach your goals and to achieve your desired level of success. I would like to welcome you to be part of our family. I would like to offer you the opportunity to become one of our ambassadors, where you will have a voice. You will have a front row seat to our meetings, to our staff, and to our courses. If you would like to have more information, please reach out to Professor Terry, our Executive Director, and of course, Dr. Faz, our esteemed colleague and president. And just so you know that Dr. Faz and Professor Terry are my coaches, my mentors. They are among many who have advised me over the years and have helped bring me to my desired place of success and helped me reach my potential. I welcome you. I wish you a wonderful holiday, and I thank you for this opportunity to be here. Dr. Faz? Thank you, Professor Teresa. It's a pleasure for having you here. And definitely, it encourages everybody, because we would love to be part of your team, and we want to collaborate with the Worldwide Success Academy. Obviously, I am the president, but I invite everybody to be part of our team and our family. This is a worldwide organization. We are trying to provide affordable access to the information which people need to succeed. And those softer skills which we cannot get from any other conventional institutions or colleges or universities, we are here to provide you. And we have our professors, teachers, and trainers. They have a lifetime experiences. I mean, it's not theoretical, it's all practical. We don't teach or preach something which we never did ourselves. So let's join this team and be a part of either as a student or as a teacher. Both ways. It's open for everyone. Bring your all these expertise which you have on the table, so we can definitely explore it, and we can talk, and we can teach, and we can try to reach out from for the rest of the world so they can learn from us. We have another speaker today, is a very good friend of mine. He's I can say a rising star. He is getting in this industry, and he is raising very fast. He's from Karachi, Pakistan. He has an experience as a teacher for the last 30 years. He retired in a very young age, and he has a lot of passion to serve the people and help others to succeed. So please help me welcome my friend, Mr. Khalik Ahmed. Mr. Khalik Ahmed, he is our next speaker. Assalamu alaikum and hi to everybody. ये ओकेजन जो कि पाकिस्तान की जश्न आज़ादी 74वीं जश्न आज़ादी के ये मनाया जा रहा है, मैं आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ, और उसके साथ साथ सर फाज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हमको ये मौका दिया कि हम तमाम दुनिया से और पाकिस्तान के लोगों से कनेक्ट हों और अपनी बात तमाम दुनिया को सुना सकें, बता सकें। और मैं सबसे पहले हमारे मेंटोर डॉक्टर फाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया। ये मेरे मेंटोर भी हैं और ये मेरे कोच भी हैं, और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने जहाँ भी काम किया बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत ही ईमानदारी से काम किया। उसके साथ साथ ये जो तकरीब है
74वीं जश्न आज़ादी की। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम लोग आए और इस जश्न आज़ादी को एक नया रंग दिया। जैसे कि टेरी ब्रोथल हैं, हमारी थ्रेसा हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और हमारे दूसरे जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये तमाम के तमाम लोग अपनी फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मेरा जो एक पर्पज़ है कि मैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आया, या मैं किस पर्पज़ के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है सबसे पहले इंसानियत की खिदमत करना। ये हमारी टीम के जो लोग हैं उन तमाम लोगों का काम यही है कि वो सबसे पहले इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और वो सब अपने अपने शोबों के अंदर हर तरीके से इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा मेरा भी यही पर्पज़ है और मेरा भी यही गोल है। और हमारे जो मेंटोर हैं, मेरे ख़ास तौर पर सरफराज साहब, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस तमाम सिनेरियो को देख रहे हैं, और आप तमाम लोग भी देख रहे हैं कि हम एक सही रास्ते पर जा रहे हैं। वो रास्ता जो पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा, और पाकिस्तान का वो चेहरा जो कि मस्क कर दिया गया था किसी वजह से, वो रोशन चेहरा सरफराज के ज़रिए पूरी दुनिया पर वाज़े होगा कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और पीसफुल लोग हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को ये दावत देता हूँ कि आप तमाम लोग इस वर्ल्ड सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आपके वो मसाइल जो दूसरी जगह से सॉल्व नहीं होते हैं, वो यहाँ पर आकर आप आएंगे तो आपके मसाइल सॉल्व होंगे। और आप ये देखेंगे कि ये एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से इसका नाम है वर्ल्ड सक्सेस एकेडमी, तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से बूम करेगी और ये लोगों की खिदमत करेगी। और मैं बिल्कुल इसका मुस्तकबिल देख रहा हूँ कि इसका मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है, जिस तरीके से कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। सर फाज की रहनुमाई में हम तमाम लोग इंशाअल्लाह अपना जो पर्पज़ है उसको पूरा करेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों को आने की दावत देता हूँ कि आप आइए और सुनिए हम लोगों को, और ज्वाइन कीजिए वर्ल्ड सक्सेस एकेडमी को, कि जिसमें हमारे डॉक्टर फाज साहब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई करते हैं, और तमाम लोगों की जो भी यहाँ पर आएंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी रहनुमाई करेंगे। और आप लोगों को वो मुश्किलात, वो परेशानियाँ जो आपको लाहक हैं, इंशाल्लाह आपको उनसे निजात हासिल होगी, और आप एक अच्छे और पुरअमन शहरी बनेंगे, और आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो मैं ये आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए और हमारा साथ दीजिए। मैं डॉक्टर फाज साहब का और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं पूरे वर्ल्ड से बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, और अपने पैगाम को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ। ये पैगाम इंसानियत का पैगाम है, ये पैगाम अमन का पैगाम है, ये पैगाम तमाम दुनिया के लोगों के लिए है, तमाम दुनिया के हर शख्स के लिए है। और ये पैगाम डॉक्टर फाज साहब की तरफ से है जो पूरी दुनिया को पहुंच रहा है, और इंशाल्लाह इसका फेज़ भी डॉक्टर साहब की तरफ से तमाम दुनिया को पहुंचेगा, और लोग तो जोक दर जोक इसमें शामिल होंगे। और हम बिल्कुल आप लोगों से हर तरीके का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग आइए और हमको ज्वाइन कीजिए। आप बहुत ही मुफीद तरीके से अपने आप को बना सकते हैं यहाँ पर शामिल होकर, और कह सकते हैं कि हम भी एक प्रोडक्टिव हैं, और आप अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगे, और अपनी लाइफ के अंदर आप चेंजिंग पाएंगे। तो आपकी लाइफ यकसर तब्दील हो जाएगी। आपकी वो लाइफ जो एक नाउम्मीदी की लाइफ आप अगर गुजार रहे हैं तो आपको उम्मीद नज़र आएगी। आपको अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी कि आप वाकई ही अपने आप को ये महसूस करेंगे कि हम अब बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
اور میں حاضر ہوں ہر طریقے سے کہ آپ آئیے اور میں اپنا جتنا بھی تجربہ ہے لائف کوچ کا، موٹیویشنل اسپیکنگ کا اور ایز اے ٹرینر اور ٹیچر کا، میں تمام چیز آپ کو دوں گا انشاءاللہ. آپ آئیے اور ورلڈ سکسیس اکیڈمی کو جوائن کیجیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل آف یو. شکریہ خلیق صاحب آپ کے اس آفر کا، اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. بہرحال دیکھیں جی، یہ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم ایک ساتھ مل کر، کیونکہ دیکھیں one is too small of a number to achieve greatness. تو ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. فرد واحد کوئی بھی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا دنیا میں. آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے کہ آپ نے کامیابی چھوٹی موٹی تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر بڑے کام کے لیے ہمیشہ ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹیم تبھی بلڈ ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو اور ان کے خواہشات کو، ان کے مفادات کو بھی اپنے سے بہتر آگے رکھیں. تو ہم خوش ہیں کہ آج ہم سب جمع ہیں ایک جگہ. تو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مقرر کو دعوت دیں، آئیے ایک چھوٹا سا ایڈ دیکھتے ہیں. As we go about our daily lives, we experience all kinds of influences from the outside world. We are inundated with countless frequencies flying through the air and invading our awareness. How can we possibly hope to counteract these influences that enter through our senses 24 hours a day? Rather than being unaware of the negative, complaining about it, or trying to fight it, why not just notice once and for all that you hold the control? تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مقرر کی طرف. آج میں اس مقرر کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے نہ صرف خوشی محسوس کر رہا ہوں بلکہ فخر بھی محسوس کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا نوجوان جس سے حال ہی میں میری ملاقات ہوئی، پاکستان میں آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور نہایت نرم دل رکھتے ہیں دنیا کے لیے بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والے سب لوگوں کے لیے. بہت انٹیلیجنٹ، بہت باوقار. شعبہ ان کا ہے آئی ٹی کا، لیکن پیشن ان کا ہے خدمت خلق. تو پلیز ہیلپ می ویلکم ہمارے نیکسٹ مقرر ہیں آزاد کشمیر سے نوجوان دوست سجاد خان. سجاد خان، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ ہائی ایوری ون. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان ٹو آل آف یو. And thank you so much, Dr. Faz and the team, for arranging such a nice training festival and giving us an opportunity to participate in this session and to learn. It is an honor for me to be part of this session. So, as I was told that I need to talk about how to make life beautiful after this COVID-19. So I would start that. If we talk about positive things that happened during this COVID-19, it brings us to nature again. People were giving time to their families. They had enough time to interact with their loved ones. Everyone got the opportunity to understand each other, knowing about their problems and reassessing each other. Together they faced all difficulties. They handled all pressure. They learned to keep themselves cool and calm in such a crunch situation. They have learned how to survive.
They practiced how to be disciplined, to be patient, tolerant. This is actually nature teaches us. I would like to talk about the people who lost their jobs. They could be from top management, CEOs, managers, even the lower staff. Surely they would have realized the pain of those who are already jobless. I hope that once they would get opportunity again, they would think about others as well. We have seen that whole world has turned into a truly global village. Businesses are being run virtually, schooling is being done virtually. New technology, which we were expecting that the world would transform into next 10 to 15 years. But this pandemic has made the world to transform just in a few months. People have realized the importance of technology. Now it's very easy to convince the masses about technology. If we talk about developing countries like Pakistan, it's a huge potential, especially in IT industry. IT people could give solutions of problems because we have a lot of problems to be solved. For example, recently, Uber and Cream services were launched in Pakistan. We have seen that they have created not only huge employment opportunities, they are also making passengers' life easy. They are truly serving others. Similarly, we have another food providing service, Food Panda, is being exceptionally doing well. We need to have a similar kind of more solutions. On the other hand, e-commerce business has great potential. People can purchase items of their choices and can be delivered at their doors. Online schooling can play a major part to improve the quality of education as well as can reduce cost fee we are paying. Last but not least, we will have to go to organic food. We will have to do businesses in dairy industry, poultry, vegetables, and fruits at home. We need to grow these items at home. In such a way, our health would be better and our immune system will perform better for future unseen viruses. Thank you very much. Over to Dr. Faz. Now you can hear me. Yes. Okay. Thank you very much, Ajad. What a great idea you just gave us. And that's all young leaders we need for our nation, especially for Pakistan, because our 43% of the population in Pakistan is young generation. So you are the real future of this country. And if people like you, if they will wake up and if they will take the charge, I don't see any reason this country should be left behind. We have a lot of great things to go, and we have technology experts here. We have very intelligent people around us. Thank you very much, Sajjad. It's again a pleasure to have you. And with this, I am going to move to the next speaker. And before we go there, let's see another ad.
At one point in history, we did need to reinvent the wheel. What's the value of one good idea? Be open to receiving your idea today. Thank you very much for having this passion and patience to watch this. And with this, we'll move on to the next speaker. And I believe we have a lot of other speakers already joined us. So I am going to move a little faster. But let's see. So I would like to invite now another great coach, trainer, Reiki master. A lot of great talent this gentleman has. He's a he is a book reader. That's the one thing which I love in him, because he is a great reader. He's an author. He's an international speaker. Please help me welcome my friend from all the way from Karachi, Professor Muhammad Saqib. Professor Muhammad Saqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And thank you, Dr. Faz, and all the team of Worldwide Success Academy. اور آپ سب کو سب سے پہلے انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو. اور ہم کوئکلی اپنی گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹ کورونا افیکٹ کے اوپر. تو کورونا کے بعد جو لیسن سیکھے ہم نے, سب سے پہلا لیسن اس میں تھا میرے دوستوں, who will cry when you die. جب آپ کی موت ہوگی تو کون روئے گا. اس پہ بہت اچھی بک بھی ہے ایک رابن شرما کی, وہ بک بھی پڑھیں آپ لوگ. اس کو ہم ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں گئے رات کو اور آپ اکیلے تھے, اور اچانک محسوس ہوا آپ کو کہ اس بیڈ روم میں آپ کے علاوہ بھی کوئی بندہ ہے, اور آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ موت کا فرشتہ ملک الموت تھا. اور ملک الموت نے بہت آہستگی سے, بہت نرمی سے آپ کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو لے کر اپنے خالق کی حقیقی کے پاس چلے گئے وہ. اور اب آپ ڈیڈ باڈی کی صورت میں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں, تو وہ کون سا پہلا بندہ ہوگا جس کی خواہش کریں گے آپ کے وہ سب سے پہلے اس کمرے میں آئے. ایک بار پھر سے سوچیں, وہ کون سا بندہ ہوگا جس کی آپ خواہش کریں گے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے ڈیڈ باڈی کی صورت میں سب سے پہلے اس کمرے میں آئے. اور اس کے بعد وہ کون سے 4-5 لوگ ہوں گے جو اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آئیں اور آپ کو دیکھیں ڈیڈ باڈی کی صورت میں. میرے دوستوں, سننے والوں, یہ 4-5 لوگ سوچے آپ نے, یہی لوگ آپ کے اپنے ہیں, وہ لوگ جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہے. کورونا نے یہ سبق دیا آپ کو کہ صرف یہی لوگ آپ کے اپنے ہیں, آپ کے قریبی لوگ, آپ کی فیملی کے لوگ, آپ کے پیرنٹس, آپ کی وائف, آپ کے بچے, صرف یہی لوگ آپ کے اپنے ہیں. اور باقی لوگوں کو بھی دکھ ہوگا آپ کی موت کا, لیکن یہ وقتی دکھ ہوگا. تو ہم نے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور کوالٹی ٹائم دینا ہے اپنی فیملی کو. یہ پہلا سبق تھا کورونا کا. اور کورونا کا سیکنڈ لیسن کہ ہم فالس آپٹیمزم سے بچیں. اب یہ کیا چیز ہے, ہم سارے ٹرینرز, ہم سارے مائنڈ سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ, ہوپ فار دی بیسٹ, اور ہم بینگ مسلم بلیو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن کورونا نے اس کا ایک اور اینگل دکھایا ہمیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ بٹ ریڈی فار دی ورسٹ, کہ آپ اچھے کے لیے تیار ہیں لیکن ورسٹ کے لیے بھی ریڈی رہیں. کورونا نے بتایا جو لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پوری کی پوری, ٹورزم انڈسٹری, ایئر لائنز, پورے کا پورا ایجوکیشن سیکٹر, کالج, اسکولز, یہ سب کا سب ڈائریکٹلی انفیکٹ ہو گئے. بہت بڑا کٹ لگ گیا. صرف چائنا میں 48 لاکھ فیکٹریاں بند ہو گئی. تو اس نے بتایا کہ کوئی سیکنڈ سورس آف انکم ہونا چاہیے. وارن بفیٹ کے الفاظ میں کوئی سیکنڈ سورس آف انکم آپ کا ہو, کوئی تھرڈ سورس آف انکم ہو آپ کا, تاکہ اگر ایک رستہ بند ہو جائے تو دوسرے راستے سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکیں. اس طرح کرنے کوئی بندہ بیمار ہے, اس کو لاسٹ اسٹیج کی کینسر ہو گیا ہے, وہ لاسٹ اسٹیج کی بیماری میں ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں ہوپ فار دی بیسٹ, یہ بندہ سروائیو کرے گا, ہوپ فار دی بیسٹ. میڈیکل ٹیم کہتی ہے کہ نہیں, اس کے پاس صرف 3 سے 4 مہینے ہیں. تو آپ ریڈی فار دی ورسٹ بھی رہے ہیں کہ جب یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا, سپوز آپ کے فادر ہیں, تو اس کے بعد جو لائبلٹی میرے کندھوں پر آئے گی, میں اس کو کیسے بیئر کروں گا یا کیسے بیئر کروں گی. آپ کے ریلیشن شپ میں ایشوز آ رہے ہیں, سیپریشن کی طرف بات چیت جا رہی ہے, تو ہوپ فار دی بیسٹ پہ رہ رہے ہیں صرف, بلکہ ریڈی فار دی ورسٹ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں. جب یہ ریلیشن شپ بریک ہو جائے گا تو اس کے بعد لائف کیسے جائے گی. یہ سیکنڈ لیسن تھا. اور اس کے ساتھ کورونا نے کیا لیسن دیا ہمیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں نے پڑھا ایک بک میں, ایک پادری سے پوچھا گیا, بہت فیمس تھے, کہ بھائی آپ نے اس جنگ کے دوران کیا اچیومنٹ تھی آپ کی, آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا. اس پادری نے کہا کہ اس جنگ کے بعد جس میں کروڑوں لوگ مر گئے, میں زندہ رہا,
मैं इस जंग के बाद जिंदा रहा, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी मेरी? तो इस कोरोना पेंडेमिक के बाद भी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सेहतमंद हैं, हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, ये हमारी अचीवमेंट है, इसको हम याद रखें। लेकिन साथ ही साथ हम ग्रेटिट्यूड को लाइफ में ले गए हैं, जिसको हम समझते हैं केस स्टडी के साथ, और वो केस स्टडी है 3300 साल पुरानी। हम सब ने फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, लेकिन वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करता हुआ दरियाए नील में गर्क हो गया, वो सिर्फ एक फिरौन नहीं था, बल्कि एक पूरी चेन थी फिरौन्स की। सैकड़ों साल तक जिन लोगों ने मिस्र को बनानी की, उन सबको फिरौन कहा जाता था। तो उसमें से एक फिरौन का नाम था तोतनखमून। ये तकरीबन 3334 साल आज से पहले ये मिस्र का बादशाह बना 12 साल की उम्र में, और बहुत ही पावरफुल बादशाह था ये तोतनखमून। और उसकी जिंदगी में इसकी प्रस्तित शुरू हो गई, और शादी की इसने 2 बेटियां इसकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 18 साल की एज में इंतकाल कर गया। और टाइम पास हुआ, और तकरीबन 2800-2900 साल के बाद 1722 में, यानी अभी 200 साल पहले, मिस्र में एक जगह थेबीज, वहां से इसका मकबरा दरियाफ्त हुआ, और आसारे के दिनों के नायक जॉन हावर्ड, उनकी टीम ने दरियाफ्त किया। और इसकी लाश के साथ जो चीजें मिली, उन चीजों की वैल्यू एक्सेस करने में, उन चीजों को काउंट करने में उन लोगों को 10 साल लग गए। और वो चीजें कितनी थी? वो चीजें तकरीबन 5300 चीजें उसकी लाश के पास से मिली। वो चीजें क्या थी? ताबूत था, उसका फेस मास्क था, खाने पीने की चीजें थी, तीर कमान था, इस तरह की बेशुमार चीजें थी। और ये सब चीजें अभी पड़ी थी इंग्लैंड में। और अभी की बात करें, जुलाई 2019 में, यानी आज से 13 महीने पहले, उसकी एक फेस मास्क की नीलामी हुई, सिर्फ एक चीज की। 5300 चीजों में से एक चीज की नीलामी हुई आज से 13 महीने पहले, और वो 4.5 मिलियन पाउंड में सेल हुआ। वो फेस मास्क, एक फेस मास्क, लंदन का मशहूर नीलामगर क्रिस्टी के नाम से वहां पर ये सेल हुआ। और पाकिस्तानी करेंसी में मैंने वैल्यू उसकी उस वक्त असेस की थी, वो 52 करोड़ रुपए, 92 करोड़ रुपये बनती थी उसकी वैल्यू, एक चीज की। यानी वो फिरौन अपने मरने के बाद भी डॉलर्स में बिलियनियर है। लेकिन यहां पर उसको डिस्कस करने का पर्पज ये कि उसकी मौत के बाद तहकीक की गई कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो फिरौन था अपने वक्त का, जिसके आगे लोग सजदा करते थे, जो आज अपने मरने के तकरीबन 3400 साल के बाद भी अरबों डॉलर का मालिक है, उसकी डेथ कैसे होगी? तो पता चला कि वो फिरौन बेचारा मलेरिया के हाथों मर गया। जी हाँ, एक मामूली सी बीमारी जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते, फिरौन को बार बार मलेरिया हुआ, और चूंकि उस वक्त उसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं हुई थी, तो इस मामूली सी बीमारी के हाथों शिकस्त खा के वो इस दुनिया से चला गया। तो हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में जो ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, हम काउंट करें तो हम काउंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी, जिसमें से एक अभी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप पूरी दुनिया से टच में हैं, पूरी दुनिया से जबरदस्त तरीके से बातें कर रहे हैं। तो जिंदगी में कोई भी मसला है, ग्रेटिट्यूड को लाइफ में लेके आए, जिंदगी का एक गोल बनाए, और वो गोल आपका लंबा चौड़ा नहीं हो, 3 से 6 महीने के बाद आपने देखना है अपने आप को कि मैं कहां पर होऊंगा। और वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी आपको ये मैसेज देती है कि आप बेसिकली उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हीं 5 लोगों की एवरेज, उन्हीं 5 लोगों की अट्रैक्शन, उन्हीं 5 लोगों का माइंडसेट, उन्हीं 5 लोगों की बर्दाश्त, उन्हीं 5 लोगों का टेम्परामेंट, ये सब का सब आपको इफेक्ट करता है और आपकी एक पर्सनैलिटी बनाता है उसके साथ साथ। तो आपने अपने आसपास के लोगों को चेक लगाना है, आपके आसपास कौन से लोग हैं। अगर आपके आसपास जॉबलेस लोग हैं, आपके आसपास नाकाम लोग हैं, आपके आसपास मायूस लोग हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं ईद के दिन भी उदास रहते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी खास कौमियत की बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप कबूतरों में, अगर आप चूहों में उठे बैठेंगे, तो आप भी मेंटली कबूतर या चूहे बन जाएंगे। आप चाहते हो मैं ईगल बनूं, आप चाहते हो मैं शेर बनूं, तो आपको शेरों के साथ, ईगल्स के साथ उठना बैठना पड़ेगा। और वो शेर और ईगल्स अगर आपको फिजिकली नहीं मिल रहे, तो उनको ऑनलाइन देने जिसका एक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी की सूरत में आपके सामने है। और शेख सादी ने क्या फरमाया? कुल हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कि जिन्स अपने जिन्स के साथ परवाज करती है, कबूतर कबूतर के साथ और बाज बाज के साथ। और आखिरी शेर के साथ अपनी इस गुफ्तगू को इख्तिताम पे पहुंचाता हूं। कहता है ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। कोरोना का मैसेज है, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार गरन। जी हाँ दोस्तों, चांद सूरज को भी गरन लग जाता है। देख कर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान ना हो। और उसके बाद जब भी किसी ने पूछी है पहचान मेरी, जब भी किसी ने पूछी है पहचान मेरी, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान लिखा, तो हमारी पहचान मुसलमान होने के बाद सिर्फ पाकिस्तानी होने। और जो हमारे दूसरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं,
وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں, اپنی مذہب کے بعد ان کی بھی ایک ہی شناخت ہے پاکستانی ہونا. تو ہم جم کے رہیں گے, ایک مٹھی کی صورت میں رہیں گے, اور دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم بہادر لوگ ہیں, ہم آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. اور جیسے شادی کے میسج یہ کہ یو آر دی اونلی یو اینڈ دیٹ از یور پار. اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, نئے اسکل سیٹ سیکھیں, نئے چیمپئن دوست لائف میں لے کے آئیں, نئی بکس پڑھیں, کیونکہ کامیابی کے پاس بھی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کتابوں کے بغیر وہ آپ کو نیکسٹ لیول پر لے کر جا سکے. یوٹیوب پر صرف وہ چینلز فالو کریں, وہ چینل جو آپ کو میسج دیتا ہے کامیابی کا. یاد رکھیں, ناکام لوگوں کی دو بڑی نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی ہے, اگر آپ دیکھ لیں آپ کے اندر ہے تو جب تک وہ کام نہیں چھوڑیں گے ناکام ہی رہیں گے. پہلی نشانی ہے کہ ناکام لوگ ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی گاربیج دماغ میں لے کے جاتے ہیں. اور دوسری نشانی کیا ناکام لوگوں کی, ان کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہوتا, جو دل چاہتا ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ دو کام چھوڑیں, اپنی کمپنی کو چینج کریں اور لائف کو لے کے جائیں نیکسٹ لیول پہ. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب, بیک ٹو یو. آپ نے میوٹ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, میوٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے. اچھا, تھینک یو سارے. تو بہت شکریہ ثاقب بھائی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور آئی ایم سو ہیپی دیٹ you pinpointed those things that what we have to do while we are getting out of this frustration, confusion and depression. And still we are watching still Netflix movies. How you could expect that your future is going to be very bright? So we have to get out of that stupid habits, and we have to unlearn those stupid things, and we have to start something positive which can make our life better and prosper. Thank you, Professor Saqib. I truly appreciate. تو خواتین حضرات, اس کے بعد چونکہ ایک پوری لائن اپ ہے میرے پاس اسپیکرز کی, اور ابھی وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے, میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, لیکن الحمدللہ دوستوں کا یہ تعاون ہی انسان کو ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. تو یہ حوصلہ ہمیں آپ دوستوں سے ہی ملا ہے. تو آئیے, اس سے پہلے کہ اگلے اس کی طرف چلیں, لیٹس سی another ad. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you'll find an excuse. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. The successful warrior is the average man with laser-like focus. The way to get started is to quit talking and start doing. I never dreamed about success. I worked for it. If you believe it, you can achieve it. تو دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے اگلے اسپیکر کی طرف. آپ کا تعلق قائد کے شہر کراچی سے. آپ پچھلے 25 سال سے ڈائریکٹریس ہیں مونٹسری اسکول کی, which is a part of educational system. لیکن سب سے تکلیف دہ بات جو میں نے محسوس کی کہ شعبہ تعلیم کا یہ وہ سب سے انتہائی اہم اور حساس حصہ ہے جس پر ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. جیسا کہ ابراہیم ماسلو کہتا ہے اپنی اسٹڈیز کے بعد
جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میرے ایک اور اچھے استاد اور مینٹور ڈاکٹر بروس لپٹن نے بھی اس کی بات کا اعادہ کیا کہ انسانی زندگی کے پہلے 7 سال جب وہ پیدا ہوتا ہے and when he gets up to 7 years of his age, that is the foundation of his own personality, where he has nothing in his mind. His mind is like a blank slate. He doesn't have any external environmental things. He had nothing from outside. So whatever he learns, whatever we teaches him, that kid, it gets stuck in his subconscious mind for the rest of his life. So the Montessori part of the education is the most important piece of education, which we have to concentrate. Unfortunately, we just overlook at that. So she is been serving as a directress of Montessori for the last 25 years. She's from Karachi, highly educated. She got certification from world-renowned AMI, which is basically for Montessori education, that institute, which teaches specifically for those young age kids. So please help me welcome one of our speaker who has the most education and most experience in that. Let's see how she sees this world post-pandemic, how she can help other people to understand the child psychology and also how to teach those young kids in post-pandemic situation. Please help me welcome Miss Safia Jabin. Safia Jabin. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और डॉक्टर फाज आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग फेस्टिवल में हम ये टीम का हिस्सा मुझे भी बनाया और मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आके अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं और इस तरीक़ा तालीम की अहमियत का बारे में कुछ लोगों से को बता सकूं कि कोविड-19 के बाद इस तरीक़ा तालीम के में क्या हमें कमी महसूस हुई और हमें उसमें मुस्तक़बिल में क्या काम करना चाहिए अपने मुल्क के लिए कि जिसमें बहुत बेहतर तरीक़े से हम इस एज के इस उम्र के बच्चों तक तालीम को पहुंचा सके और उनकी शख्सियत को के स्किल्स को उजागर कर सकें और उनकी डेवलपमेंट कर सकें. पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ काम करती रही हूं और काफ़ी अच्छे मुझे नताइज भी मिले हैं, मगर अब इस स्टेज पे आने के बाद मैंने ये जज किया कि अब इंतहाई ज़रूरत है कि बच्चे की शख्सियत के लिए मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स के साथ साथ बच्चे के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी इस तालीम से को मुतारिफ कराया जाए. जब एक बच्चे की शख्सियत बनती है, जैसा कि मादाम मॉन्टेसरी ने हमें बताया कि बच्चा और टीचर और तैयार शुदा माहौल, इसी तरह से मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन का एक ट्रायंगल है जिसको हमें हमेशा बैलेंस करना चाहिए, टीचर, चाइल्ड एंड अ पेरेंट्स. तो ये एजुकेशन मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये ट्रेनिंग जो है इसको हम कोविड-19 के तजर्बे के बाद मैं इस मकसद को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरा हमेशा से ये मकसद रहा क्योंकि मैं अपनी वालदा से अपनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उन्होंने मुझे दी थी एजुकेशन का एक ट्रायंगल. और उसके बाद जो है अब इस पेंडेमिक के बाद मैं बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये घर घर जो है हर घर में एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, पहुंचाना चाहिए और इस ट्रेनिंग को आम करना चाहिए. तो इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी टीम के साथ और अपने तमाम मेंबरान के साथ, डॉक्टर फाज के साथ और भी मेरे मेंबर्स जो हैं एक टीम के साथ मैं ये अपने ख्यालात का इजहार कर रही हूँ और अपनी सर्विसेज दे रही हूँ कि फ्यूचर में जो है इस ट्रेनिंग को तकरीबन हर एक को हासिल करना चाहिए, जिसकी बहुत अहमियत है. बच्चे की शख्सियत के बनाने के लिए अगर सिर्फ टीचर ही नहीं, मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स ही नहीं, तमाम ख़वातीन जो कि मुस्तक़बिल में की माएँ हैं और पहली रोज़गार जो है बच्चे की वो माँ की गोद होती है,
جب ماں کے پاس یہ تعلیم ہوگی اور یہ ٹریننگ ہوگی تو بچے کی شخصیت ایک بہت بہتر شخصیت بن کے سامنے آئے گی. اور مونٹسری سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت آسان ٹریننگ ہے یہ, اور بہت طریقے سے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے اس ڈیجیٹل سے کو اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کا عزم رکھتی ہوں میں کہ آئیے اور ہم اس ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے یہ گھر گھر اس تعلیم کو عام کرتے ہیں, اس طریقے کے ٹریننگ کو عام کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم پورشن ہے بچے کی شخصیت کے لیے. کیونکہ ڈاکٹر مونٹسری یہ ایک بہت اچھی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ لٹریسی از اے جرنی ناٹ اے ریس. یہ ایک سفر ہے, بچے کے تعلیم کے سفر میں اس کے والدین بھی, اس کے اساتذہ بھی, اس کا ماحول بھی, سب اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے اس ٹیم کا حصہ بنایا. اپنے تمام ٹیم ممبرس کو, اسپیشلی ڈاکٹر فاز, آپ کو میں جشن آزادی مبارک کا پیغام دیتی ہوں, اور اپنے تمام بہنوں کو, بیٹیوں کو اس بات کا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مونٹسری ٹریننگ کے کو اپنے تعلیم کا حصہ بنائیں, لازمی بنائیں اس کو. کیونکہ ایک نسل کو پروان چڑھنا ہے تو جب ایک ماں جس کی پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے, اور جب ان کے پاس یہ علم ہوگا تو وہ بچے کی شخصیت بہت اچھی طرح سے پروان چڑھے گی. اور انشاءاللہ پاکستان سے ہمارا آبجیکٹو ہے, ہمارا مقصد ہے کہ گھر گھر تعلیم پہنچائی جائے اور جہالت کا خاتمہ کیا جائے. تو شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ محترمہ صفیہ جبین صاحبہ, آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی. میرا خیال ہے ہمارے تمام دوستوں نے بھی اور ناظرین نے بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہوگا کہ وہ حصہ عمر کا کتنا حساس ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے اس میں تربیت کا ہونا. تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اور بہت سے مقررین بھی موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے مقرر کو دعوت دیں, اگر مجھے, کیونکہ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص نمبر تک اجازت دیتا ہے روم میں لانے کی, تو آپ ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ ہم نے آپ کو اگنور کر دیا ہے, صرف ہمیں آپ کو بیک روم میں لے جانا پڑتا ہے. تو آپ ایسا محسوس قطعی نہ کریں کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ اس کی ایک تعداد ہے. یہ زوم سے ذرا مختلف سروس ہے, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ شاید میں زوم پہ ہی کروں بجائے اس کے. پر چلیں آگے چلتے ہیں. آج ہمارے بالکل نو متعارف ایک دوست ہیں. آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, آپ ماہر تعلیم ہیں, پروفیسر ہیں, اور ایک اچھے مفکر بھی ہیں, اور آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت بڑے دانشور ہیں. اور ابھی حال ہی میں اس پروگرام کے شروع ہونے سے چند دن پہلے ہی میرا ان سے تعارف ہوا ہے, اور مختصر سی بات, کیونکہ موقع نہیں تھا اتنا زیادہ, لیکن میں چاہوں گا کہ پھر تفصیل سے ان کو میں اپنے شو پہ لاؤں اور باقاعدہ ایک پورا انٹرویو ان کے ساتھ کیا جائے اور بات چیت کی جائے. تو اب میں انہیں دعوت دے رہا ہوں. پلیز ہیلپ می ویلکم پروفیسر محمد عرفان اشرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے تمام پاکستانی قوم کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھے موقع دیا اور آپ سے انٹریکشن ہوا اور بہت اچھا لگا. دو تین باتیں اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ ہیں, اور آپ نے سکسیس ٹریننگ کے نام سے ایک ادارے کا قیام کیا ہے. کامیابی کیا ہوتی ہے, اور کامیابی سے پہلے ہم تھوڑی سی بات پاکستان پر ضرور کرنا چاہیں گے, کیونکہ آج یوم آزادی ہے. اور مجھے میرا تعارف تھوڑا سا یہ ہے کہ میں پاکستان میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پچھلے کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں, اور گجرانوالہ میں ایک ریڈیو پر میں ایز اے آرجے کام کرتا ہوں, اور میرا تھوڑا سا تعلق اسپرچویلٹی پر صوفیہ اور سینٹ کے میسیجز کو عام پبلک تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, جس سے معاشرے میں ہارمنی پیدا ہوتی ہے, جس میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اس قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں. تو قائد اعظم کے وہ الفاظ جو 14 اگست 1947 کو
बाबा कौम ने तमाम कौम के सामने रखे कि हमें जो दुख दिया गया है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, और हमें और मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि दुनिया हम पर रश्क करे। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है ये मेरा जुनून है, मेरी मोहब्बत है, मेरा ईमान है, मेरा इरफान है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं और आप और हम सब कुछ इस तरह मुआशरे में पार्टिसिपेट करें कि और तमाम दोस्तों के लिए वो एक लफ्ज़ थोड़ा सा बयान करने के बाद कामयाबी पर गुफ्तगू थोड़ी सी करके मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो यकीन है, और वो यकीन का जो मादा है वो ईकान है, और ईकान को अरबिक में और हमारी उर्दू में तो यकीन कहते हैं, पता नहीं इसको इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब के इस प्लेटफॉर्म से भी हम ये कोशिश करेंगे, और अगर डॉक्टर साहब के साथ हमारी कुछ मोहब्बतनामा आगे बढ़ा तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स के अंदर और इस पूरी दुनिया में बसने वाले हर शख्स के अंदर ये यकीन की दौलत पैदा कर दें। मैं अपने उस्ताद जी के पास बैठा हुआ था तो मेरे उस्ताद जी ने ज़मीन पर पाँव मारा और पाँव मार कर कहा कि इस ज़मीन के अंदर से सोना निकलेगा, तेल निकलेगा। मैंने कहा सर कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा बस इसी यकीन को पैदा करके कि इसके अंदर सोना है, तेल है, तुम खोदना शुरू कर दो, पर यकीन होना चाहिए। तो ये यकीन पैदा कैसे होता है, इसको पैदा करने के क्या केमिस्ट्री है, क्या एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसको हमने अपने उस्तादों से सीखा है, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करेंगे कि हम उसको आगे लेकर चलें। और जो सक्सेस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ने दिया है, ये भी एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है कि क्या कामयाबी सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट का हसूल कामयाबी है? क्या कामयाबी कहीं एथिक्स आपके उसकी ऊंची उड़ान का नाम कामयाबी है? क्या कामयाबी आपकी सोशलाइजेशन का नाम कामयाबी है, या कामयाबी किसी और चीज़ का नाम है? और चूंकि मुझे थोड़ा सा टॉपिक इस तरह से था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुतल्लिक मैं आपको अपने यकीन और जुनून के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हर फर्द को इस तरीके से मजबूत करें कि वो पाकिस्तान का दमकता सितारा बन सके। दूसरा, कोविड के बाद का पाकिस्तान, ये कोरोना के बाद का पाकिस्तान, अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कर लें कि यूँ लगता नहीं है कि भगवान ने, खुदा ने, गुरु ने, कहीं खुदावंद ने, कहीं सुपर एनर्जी पावर ने कहीं ना कहीं हमसे किसी न किसी बात से कोई ना कोई खफगी का इजहार कर दिया है। हमें कोविड के अंदर 3-4 पैरामीटर्स के अंदर बात करनी है, जैसे साकब अभी बात कर रहे थे और बहुत सारे दोस्तों ने अपना अपना नुक्ता नज़र बयान किया। मैं इस कोविड को 3-4 एंगल से देखता हूँ। नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी। आपका किसी भी गॉड के साथ ताल्लुक है, आप अपने उस गॉड के साथ अपने ताल्लुक को दोबारा मजबूत कर लें, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक अपने उस गॉड के साथ, वो भगवान हो सकता है, वो अल्लाह हो सकता है, वो खुदाबंद हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो कोई सुपर एनर्जी पावर हो सकती है, उसके साथ जब आपका ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर आपको ये जो बहुत बड़ा कोविड नजर आ रहा है, फिर ये आजमाइश नजर आएगी। और फिर हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि परेशानी आ जाए तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि परेशानी अगर आपको अपने गॉड के नज़दीक करती है तो परेशानी तो बहुत अच्छी बात है कि उसने आपको मुजतमे होने का, उसने आपको अपने आप को रीबिल्ड करने का मौका दिया। दूसरा, एक एंगल आप स्पिरिचुअलिटी के एंगल से चलें। अगर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं रखते तो आते हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। आपको 13 मार्च से लेकर 14 अगस्त तक पूरे 6 माह आप अपने अपने घरों में थे, और अपने अपने घरों में आप पूरी तन्हाई में मौजूद थे,
اور اس تنہائی میں آپ کو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا تھا، اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی تھی اور اپنے آپ کی مینٹل گروتھ کے اوپر کام کرنا تھا. آپ کو بکس، ابھی بکس کا ذکر ہوا، آپ کچھ کتابیں پڑھیں، اس میں اپنے کچھ نئے نئے آئیڈیاز سیکھیں، اس میں کچھ نئی ٹیکنالوجیز سیکھیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ. جیسے اقبال نے کہا نیا راز ہے انداز بدلے گئے اور زمانے کے انداز بدلے گئے اور زمانہ بدل رہا ہے. جیسے ٹیکنالوجی کی بات ہوئی تو آپ کو جدید ٹیکنالوجی سیکھنا ہے، آپ کو جدید علوم سیکھنا ہے. جدید علوم کے ساتھ آپ کو بزنس اور اکانومی میں مضبوط ہونا ہے. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے پیشے کے ساتھ مکمل انصاف کیجیے. اگر آپ پروفیسر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیجیے. اور اگر آپ مزدور ہیں تو اس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کیجیے کہ لوگ کہیں ہاں یہی وہ مزدور ہے. جیسے ابراہم لنکن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی تقریر میں یہ کہا تھا، ہاں میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا باپ وہ موچی تھا کہ جس نے دنیا کا بیسٹ جوتا بنایا تھا. تو بہرحال دوستو، بس میرا کووڈ کے متعلق یہی پیغام ہے کہ ان دنوں میں آپ کو اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو اس طرح مضبوط کرنا ہے کیونکہ آنے والا وقت اٹ مائٹ بی پاسبل کہ تھوڑا سا کرائسس کا وقت ہوگا. اور ہم نے ڈاکٹر فائز جیسے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کرائسس میں مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کرزمیٹک پرسنالٹی لے کر ابھرتے ہیں. اور جن انڈیویجول نے، جن اداروں نے، جن ممالک نے ان کرائسس میں اپنے آپ کو مینج کر لیا. آپ 1918 کے اسپینش فلو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد امریکہ نے اپنے آپ کو ایز اے نیشن بلڈ کیا تھا. اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد جن قوموں نے اپنے آپ کو بلڈ کیا کرزمیٹیکلی، اس کرائسس کے اندر اپنے آپ کو نکالا، تو کرائسس کے اندر سے جو قوم نکلتی ہے وہی کرزمیٹیکلی دنیا میں پرفارم کرتی ہیں. آئی ایم ویری مچ شیور، اور میرا بلیو اس بات پہ، میرا یقین اور ایقان اس بات پر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگ اس وقت اس فیز سے گزر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کی وہ قوم بن کر آگے آئے گی کہ جس پر آپ، میں اور ہم سب فخر کر سکیں گے. ہاں یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی. آپ کا بہت شکریہ، میں نے آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کامیابی پر، سٹریس مینجمنٹ پر، یقین کو پیدا کرنے پر، اپنے آپ کو بلڈ کرنے پر بہت ساری باتیں ہم مل کر اسی پلیٹ فارم سے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں، اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ اگلے کسی سیشن میں آپ سے ذرا تفصیل سے بات ہو. اور چونکہ یہ میرا ہمیشہ سے کہ میں سیکھتا ہوں اور ہمیشہ ایک شاگرد رہا ہوں میں، اور آپ جیسے استادوں سے سیکھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی شو پر لا کر ہم تفصیل سے بات کریں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. چلیں آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. ابھی اور اچھے مقرر آتے جا رہے ہیں، اور کچھ غیر ممالک سے بھی لوگ اب شریک ہونا شروع ہو چکی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے مقرر کی طرف چلیں، ایک چھوٹا سا ایڈ. The biggest obstacle in your life today could be one of the smallest words in our language. So many times we blame everyone and everything else for our situation, when the problem is this little two-letter word. Pound for pound, it's one of the most powerful and limiting words we can say. What is that word? If. I'll really get my life together if, fill in the blank. How often this word stands in the way of us moving forward in life. How often we procrastinate by waiting for the perfect conditions to begin living life to the fullest. Everything you need to fulfill your goals is already inside you. You only need to see your boundless potential, and the journey is underway. Today,
Don't pause your dreams waiting for the right conditions. Success meets you where you step, not where you stand. Take that first step and watch your path illuminate before you. Live your life without the if. تو خواتین حضرات، اب میں جس مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی تابناک اور ابھرتا ہوا مقرر بھی ہے، ستارہ بھی ہے، اور ایسے ہی نوجوان ہمیں پاکستان کے لیے، مستقبل کے لیے ضروری ہیں اور چاہیے، اور ہم انہی کی طرف اپنی آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ میری ان سے ایک ہی ملاقات ہے ذاتی طور پہ، لیکن میں نے ایک ہی ملاقات میں یہ محسوس کیا کہ یہ نوجوان بہت پوٹینشل رکھتا ہے، انتہائی معروف نعت خواں ہیں، بلند پایا بین الاقوامی سطح کے مقرر بھی ہیں، ایک پروفیشنل ٹیچر بھی ہیں، پروفیشنلی ٹرینر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے خواب بڑے، اور مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ میں ان کا ہمیشہ سے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہوں جن کے خواب بڑے ہوں۔ تو میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں، تیار رہیے، مستقبل کے عالمی چیمپئن آف پبلک اسپیکنگ، میرے دوست نوجوان جناب رضا خان۔ رضا خان ہمارے ساتھ ہیں، اور اب میں چاہوں گا کہ یہ اسٹیج اب آپ کا ہے رضا، اور ہم چاہتے ہیں آپ سے سنیں، اور شاید لوگ بہت سے آپ کو پہلی بار سن رہے ہوں گے تو وہ یہ جان لیں کہ یہ بہت بلند پایا مقرر ہیں۔ ان کی تقریریں میں نے ایک ہی سنی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک سیزن ٹوسٹ ماسٹر ہیں، کئی ممالک میں ایز اے ٹوسٹ ماسٹر تقریر کر چکے ہیں۔ تو اوور ٹو یو۔
प्रोफेसर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई आपकी बात। चलें जी, तो दरमियान में राब्ता शायद मुनक़ता हो गया था। हाँ जी, तो ये स्टेज अब आपका है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल मतीन है और मैंने एजुकेशन में एमफिल किया है और मैंने तकरीबन 25 साल बीएड और एमएड को पढ़ाया है, जो कि टीचिंग डिग्रीज हैं। जो बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद लोग मौलवी या उस्ताद बनते हैं, यानी कि मैं उस्तादों का उस्ताद हूँ कह सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग और कोचिंग और काउंसलिंग मेरी फील्ड है और मेरा पैशन है ये। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी का, डॉक्टर फाज साहब का, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदद किया और बड़ी अच्छी लोगों की गुफ्तगू सुनने को मिली, पुरमगज़ बातें सुनने को मिली। और मैं सिर्फ इसी जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो टॉपिक दिया था, मैं सिर्फ उसी तक महदूद रहूँगा, क्योंकि बातें तो करने को बहुत सारी हैं, लेकिन जो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो 10 मिनट का एक तवील वक्त दिया गया है, सॉरी तवील वक्त यानी कि मेरा मतलब है मुख्तसर वक्त दिया गया है, तो मैं उसमें जो काम की बातें जो मैंने महसूस की है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही कहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो है हमारे ऑब्जर्वेशन में आई है, हम कहेंगे कि हम अपने माहौल, अपने माशरे का इवेल्यूएशन कर लें कि पेंडेमिक में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। उसके लिए हम अपने जो हमारा एक महदूद मुशाहिदा मुतालिया है उसके बारे में चंद बातें बता दें। सबसे पहली बात तो जो मैंने ऑब्जर्व की, मैंने देखी, ज़ाहिर है मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि हम लोगों को कोई पता नहीं था कि हम भी कभी आके तो टीवी पे बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं। जैसे ही ये दौर शुरू हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, तो मेरे एक तालिब इल्म जो एमएससी मैथ्स हैं और एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं कराची में, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि भाई अब ये तो पता नहीं कितने अर्से चले, तो मुझे असातिज़ा की तरबियत करनी है और वालिदैन की भी तरबियत करनी है, तो 3-4 आप मेरे साथ सेशन करें। मैं कहा मैं दरवेश आदमी भाई, मैं बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि दरवेश और एक कमरे में बंद रहने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाला मेरे बस के काम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने उसकी फरमाइश पे, उसकी शॉप पे ये काम किया, तो पता चला कि हम भी थोड़ा बहुत क्लासरूम के अलावा बाहर भी कहीं इधर उधर भी बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत सारे हमारे साथी दोस्त जो है वो कुछ तो गवर्नमेंट के प्रेशर में आके, क्योंकि हुकूमत का भी प्रेशर था कि पढ़ाओ, कुछ ने प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में प्रेशर था कि भाई ऑनलाइन पढ़ाओ, ये बात। तीसरी बात जो अहम तरीन बात ये है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे पाकिस्तान में है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी से मेरा मुशाहिदा है, यही बड़े शहर हैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीएस इंजीनियरिंग की थी या इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए और अच्छा उन्होंने स्कूलों को उनको फरोख्त किए और उनको सर्विसेज दी। ये तो बड़ी अच्छी बात थी। एक ख़राब पहलू भी था। एक बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिसका मैंने जिक्र एक दफ़ा पहले भी डॉक्टर साहब से किया था, जो कि बीएस इंजीनियरिंग भी कराते हैं कंप्यूटर साइंस में और एमएस भी कराते हैं और उनके पास पीएचडी फैकल्टी भी है, उन्होंने जहमत ही नहीं की कि वो अपना प्रोग्राम तरतीब दें, इस्टेब्लिश करें, बनाएं, तैयार करें। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से प्रोग्राम खरीद लिया, एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट देकर, और उसके साथ उसके सर्विस चार्जेस भी उनको देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क में हुआ। दूसरी बात ये कि जैसे ये मुकर्रर बात जो बातें बता चुके हैं उनको रिपीट करना ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मजहबी थे वो ज़्यादा मजहबी हुए, जो मजहब की तरफ नहीं थे वो ज़्यादा अपनी फील्ड में हुए, जिसकी बिना पर आज पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पोर्नोग्राफी में देखने वालों में सारे फहरिस्त आ रहे हैं। और एक और इस मजहबी हवाले से एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे माहिरीन तालीम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो मजहबी तालीम के इदारे चलाते हैं उन पर तनकीद करते हैं, जो कि मैंने कभी भी नहीं की। लेकिन इस पेंडेमिक में उन लोगों ने अपने डिसिप्लिन को और अपनी तंजीम को और अपने गोल अचीवमेंट को ज़बरदस्त तरीके से साबित किया। वो ऐसे हुकूमत ने कहा भाई सारे तालीमी इदारे बंद होंगे, इन्होंने एक वक्त तक तो इंतज़ार किया,
उसके बाद उन्होंने कहा भाई हम तो खोल रहे हैं, और इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो तरीका कार मुकर्रर किया था, जिसको हम आज के ज़माने SOPs कहते हैं कि भाई ये जो ये इकदाम करने, आपने फासले से बिठाना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखना है, उससे उन्होंने क्लासें भी ली और बाकायदा इम्तिहान भी मुनक़िद किए, जिसकी अखबारों में तस्वीर आई, TV पे तस्वीर आई, फेसबुक पे हमें दोस्तों ने भेजी, दूर दूर बिठा कर, और उनको उन्होंने वो मास्क लगा कर और सैनिटाइजर, जो भी हिफ्ज़ान सेहत की जो बताए गए SOPs गवर्नमेंट की तरफ से, उनको मद्देनजर रखते हुए मुनासिब इम्तिहान लिया और इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। लोग हमारे माहिरीन तालीम जो बड़े बड़े अफसरों में बैठे होते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे होते हैं, उनको चाहिए सबक लें इनसे, इनसे सीखें तंजीम साजी, इनसे सीखें डिसिप्लिन। मैंने खुद इम्तिहान में काम किया है, या मैं कराची के इम्तिहान में भी, बोर्डों के काम, बोर्ड्स के काम में भी नकल की भरमार होती है। वहाँ कोई एक बच्चे ने इधर से उधर भी नहीं देखा, और ज़बरदस्त उनका इम्तिहान मुनक़िद उन्होंने किया। ये अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने तौर पे भी जो डॉक्टर फाज साहब ने जो थिंक एंड ग्रो रिच की जो सीरीज़ चलाई थी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था, उससे मैंने भरपूर न सिर्फ खुद इस्तेफादा किया, बल्कि बहुत सारे तालिब इल्मों को भी मैंने इसके ऊपर माइल किया। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप बराए करम, आपने अपने एक तकरीर में कहा था कि मैं 14 अगस्त के बाद ये यूट्यूब से हटा दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको नहीं हटाएं। हमारे तालिब इल्म अभी भी इनको देख रहे हैं और देखेंगे मज़ीद। मैं खुद इसको बार बार सुनता हूँ, और इसकी वजह से चीज़ें रिवाइज होती हैं। जैसे कि इस पेंडेमिक में मैंने बहुत सारी किताबें दोबारा पढ़ी हैं, और अब दोबारा पढ़ने से एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, नया विजन हमारा बिल्डअप हुआ है। इसी तरह हमारे तालिब इल्म भी जब इसको सुनेंगे, डॉक्टर साहब की जो लेक्चर बताएं, तो उससे यकीनन वो इस्तेफादा करेंगे, बार बार सुनेंगे, तो उनके जहन में इस चीज़ की बुनियाद मजबूत होगी। तो मेरी उससे खुसूसी दरख्वास्त है कि वो ये रिमूव ना करें, और कोई और तरीका इख्तियार कर लें, लोग इसको सब्सक्राइब करें, कुछ करें, किसी तरह इसको हासिल करें और इसमें ये रहें। और एक बात और भी, अब जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी फैकल्टी के 2 हसीन मेंबर से हमें मिलवाया, तो और उन्होंने सुबह अपना तारुफ पेश किया, तो मेरी दरख्वास्त है कि जैसे आपके पास हम लोग हैं, मुझे तो इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हम यहाँ पे ट्रेनर हैं, कोच हैं और कोचिंग करते हैं, तो वो भी इसी तरह के कोर्सेज, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इसी तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएं, और ज़रा पाकिस्तान के का जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए ज़रा कम फीस लें और वो कराएं। और इस जैसे हमारे लोग जो डेमी से कोर्स कर रहे हैं, और इस वक्त मैंने अपनी जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मेट्रोपॉलिटन में, उन्होंने भी मेरे ज़िम्मे काम लगाया था कि मैं जो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से, इनसे रब्ता करके कोर्सेज निकालूँ। वो भी मेरा काम जारी है। तो फ्री कोर्सेज, जो कि फ्री कोर्सेज होते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी कराएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर साहब कोर्सेज कराएं, उसकी फ़ीस लें, और इसी तरह हम लोग बाहर जाए बगैर ये काम कर सकते हैं। बाहर जाने की जैसे कि बात है, अभी मेरा PhD भी चल रहा था कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से, नॉर्थ कैरोलिना कैंपस से। तो मैं अभी जून में बाहर जाना था, मेरी जून गुजरा है, अमेरिका जाना था और वाइवा देने के लिए, और मुझे लगता है कि अभी मज़ीद 2 साल तक विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा नहीं खुलेंगे अमेरिका में। तो हमारा काम तो ठप हो गया। तो लेकिन ये वाला काम हमारा हो सकता है अगर डॉक्टर साहब इसके ऊपर अपना वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी में इसको जिसको कहते हैं ना कि इसको गौर करें इसको, और इसको अमली जामा पहनाएं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने देखनी थी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, हमारे वो तालिब इल्म जो कि कम पढ़े हुए थे, जो कि हायर एजुकेशन में नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे, मेरे तालिब इल्म भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज करके और वो इंटरनेट से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। जैसे बहुत सारी जो फ्रीलांसर की वेबसाइट्स वगैरह हैं, अपवर्क है, ये वगैरह वगैरह, इस किस्म की साइट से बहुत सारे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे
अच्छी इनकम भी हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारे नौजवानों को एक बड़ा वसी मैदान मिला है इस पेंडेमिक में, इससे पहले उनको पता ही नहीं था इस बारे में। चंद लोगों को पता था जो BS वगैरह कर रहे थे उनको पता था, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। अब इन लोगों ने, बहुत सारे ट्रेनर्स मैदान में आ गए हैं जो पाकिस्तान में बैठ के भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम और मीरपुर जैसे छोटे शहर में भी, जो कश्मीर के साथ वाला मीरपुर है, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अमेरिका लंदन में भी बैठ के भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन। और हमारे नौजवानों के लिए, हमारे पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट के पास अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये मसला नौजवानों ने खुद ही सॉल्व कर लिया, या पेंडेमिक की जो है कि जो ब्लेसिंग भी उनको डॉक्टर साहब कहते हैं काउंटर के हर मसले के साथ एक ब्लेसिंग भी होती है, तो ये ब्लेसिंग में भी है शामिल है। तो इसी तरह अभी मैंने पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका में देखा, एक खातून जिनको बचपन में पोलियो हो गया था, उमरकोट जो बिल्कुल दूर दराज इलाका है सिंध का, और रेगिस्तान है वहाँ पर, मैंने देखा तो नहीं लेकिन रेगिस्तानी इलाका है, उससे भी 200 किलोमीटर आगे जाके आंसू बाई कोली वो खातून का नाम था, जो कि बच्चों को पढ़ा रही, प्राइमरी लेवल का लग रहा था स्कूल है, लेकिन कच्चे बच्चे, और वो बिल्कुल ही इसी तरह जैसे शहर में मैंने मजहबी इदारों का नाम दिया, दूर दूर बैठे हुए बच्चे, उन्होंने मास्क लगाए हुए और उनके हाथों में वो शायद साबुन दे रही है, क्या दे रही है, वो हाथ धो के और बैठ रहे हैं और वो मुताला कर रहे हैं। तो कैसे कैसे हीरे दरियाफ्त हुए हैं इस पेंडेमिक में, और कैसे कैसे खराब काम हुए, जैसे हमारे लाहौर के नौजवानों ने बिल्ली को रैप कर दिया। तो ये हर किस्म की बातें हुई हैं, लेकिन बहरहाल का मतलब ये बातें सामने आई हैं। अब ये हमारा लाइफ कोचेस का काम है कि जो इस मौके से फायदा उठाते हुए लोगों की अच्छी बातों को पॉलिश करके आगे पहुंचाएं, और जो बुराइयां खामियां हमें नजर आ रही हैं वो हम उसको कम से कम तर करने की कोशिश करें। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस मौके से फायदा उठाते हुए पेंडेमिक में मैंने भी कैरियर कोचिंग की एक क्लास शुरू की है, और मुझे तवक्को नहीं थी कि उसमें इतने काबिल लोग आएंगे। MS साइकोलॉजी और एक साइकोलॉजिस्ट और लेक्चरर उसमें आए हैं, और वो मेरी क्लास बिल्कुल SOP के मुताबिक होती है, इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठ के पढ़ाता हूँ, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हफ्ते में एक दिन क्लास होती है बड़ी लंबी तवील, और बड़ा इंटरेस्ट के साथ लोग उसको पढ़ रहे हैं और शौक से उसको हासिल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। तो ये मेरा कहना था। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मतीन साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की, और आप हमेशा ही लोगों की मदद करते हैं, और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर करेंगे तो उसमें ज़्यादा जान आएगी कि तन्हा कोई ख़ास बड़ा मसला हल करना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक टीम बन जाए तो बात कुछ और होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। आई एम हम्बल मेंबर ऑफ योर टीम। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। लेकिन सर जो मैंने सर्टिफिकेट की बात की है ना, सर्टिफिकेट का इजरा कराएं, तो ये बड़ी अहम बात है। शायद आपको उसकी पावर का एहसास ना हो। हमारा हर जो भी ट्रेनर चाहे छोटा बड़ा, वो अमेरिका का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे पास तो वीजे का और जाने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनको नहीं प्रॉब्लम है। तो इस वक्त हमारे दरमियान एक शख्सियत ऐसी मौजूद है जो स्पीकर भी थे अभी कुछ देर पहले, तो वो जानते हैं कि सर्टिफिकेट का इजरा शुरू हो चुका है अमेरिका से उन दोस्तों के लिए। तो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच और 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ, उनकी सर्टिफिकेशन बाकायदा उनको सर्टिफिकेट्स इशू की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम शुरू कर रहे हैं इस सिलसिले, और आगे कोर्सेज भी हम ला रहे हैं, और बड़े काम के कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। It is my pleasure and honor. Now I have really the speakers I was anxiously waiting for. I mean, you all are great, but again, I have a leaders here. I can see on my screen leader from Lebanon, my beautiful friend. She will be right with us. But prior to it, thank you, Sadia, to join us. And I have, again, I mean, this gentleman, I can say he's an inspiration for me all the time, every single day. When I open up my computer or my phone, I see this guy is already on air and teaching and training and inspiring people. He's a TEDx speaker. He's a seasoned Toastmaster. He is a great teacher, trainer, speaker.
whatever you name it. He got a lot of hats. Although his field is banking, I don't know how he handles all that finance part with all that activities. But please help me welcome. He's joining us all the way from Dhaka, Bangladesh, MD Nazrul Islam. Thank you, Mr. Nazrul Islam, for joining us. It's an honor for me to have you. You are a true leader. I watch you. I get inspired always from you. So please, thank you so much. The stage Thank is you so all. much. Thank you so much. It's my pleasure to get in your invitation. Yes. First of all, I'd like to thank you for your invitation, and I'd like to congratulate on this special day. Happy Independence Day to all the members, all the people of Pakistan. And it's my really honor to have a very gracious word from you. That is, yes, really, I appreciate your guidance. I got a great insight from you, and that inspired me a lot, definitely. During my life, even what I started my journey, and during this pandemic, what happened, I started, I had the opportunity to interview you on during March, I think, I can remember. And on that day, you mentioned, you gave some insights on such a book that really inspired me a lot. Definitely, I was working in my profession, and I got a great insight from my academic backgrounds and my professional backgrounds, and I'm working on that. And I'd like to share with the audience that how I actually inspired to become a speaker. First, in my early stage, I struggled a lot. So I was so introvert, and even I couldn't speak before the audience. But I was a good listener. I listened what everyone around me listened carefully, and I absorbed that, and I took that. Yes, I can do something better for myself and for the community. And this way, actually, I got the inspiration in every steps, in every sphere of my life. Whenever I got the challenge, I overcome. I got the challenge and I overcome. And that actually made me a habit, build me a habit. That is, yes, I took that last challenge is I want to be a speaker. I want to be a professional speaker. And what happened? That is, I took that challenge. I got an activity. That is, yes, what I have learned, what I have got some experience from my learning. I was in AIT in last 2014, and I had the opportunity to connect with a lot of professors, and there I was not a good student even. I was so serious about my academy, but I didn't care so much about the results, because one of my professor said that, hey, don't focus on your results. You always focus on how you have learned, how much you have gathered. And during my class, during my session, I was a good listener. And I would say that very powerfully that only one skill really inspired me at this stage to become a speaker. Because the good listener can understand every topic, and the issue, the contents absorbed in one's mind, and he or she become a resource person. So when once become a resource person, what does that mean? Does they or he or she need to share that knowledge?
because it's a kind of feeling, empathy. The speaker deserves empathy, because we cannot learn better until we teach, because learning cannot be effective until we teach. So a speaker feel from his heart that is, yes, what I have learned, I need to share that, because if we don't share with other, that is, I cannot grow my learning. Even thinking cannot be grown if I don't share, if I don't keep continuing, if I don't learn continuously. So it's a process. It's a process. So we start from learning, and then absorb, and then share, and this process builds our level of thinking. So why actually I feel that, yes, what inspired me to become a speaker, whenever I got the connectivity with the resources. First of all, the first communication, I communicated with the resources. And at the final ceremony of my graduation at AIT, during the program, my professor just first, without noticing, I didn't know that instantly he asked me, "Hey, Nazrul, you are requested to speak for a few moments in front of the huge audience." I had to speak, but I was so nervous. I couldn't speak very smoothly. The professor learned that if I'm chosen, I can speak, because he observed very closely that I can speak. So in different forums, I spoke. In the class session, I spoke. So instantly, what happened? I speak very smoothly and confidently, and then I felt that, hey, my problem, but I could talk. What can I do? So next time, I got some confidence, and then got the opportunity again in that session, and I took the microphone again, spoke. And when I come back from AIT in 2015, and after that, I just searched, where is Toastmaster? I need to become a confident speaker, because I feel that what I have learned, I need to share with the people. I need to share it. Because in our community, what we see, the people learn, they know they are good students. They have one, they don't want to share with others. But what happens if they don't share with others? Because the knowledge cannot be developed, knowledge cannot be increased without sharing, without just transferring. So as a speaker, you see that as a speaker, the first and foremost task is the transformation. The transformation, a speaker plays a great role, the transformation. He or she transform from one level to another level. So as a speaker, coach, or mentor, they actually transform the person from one stage to another stage. This kind of transformation, only those who are resource persons, they can do it. But if they're effective, the effectivity comes in at this stage, that if they're not effective, they cannot transform. So that's why I learned, and I joined Toastmaster, and I participated there, and then I feel confident. I was invited by different organizers. I joined in different seminars, conference in Dhaka, and
in the globe even. I got the first invitation from my LinkedIn profile that, hey, one day I got the message, hey, we are going to arrange a conference in Dhaka. So would you like to be a speaker? And I was so courageous. Whenever I got the opportunity, I took that because I was courageous. Yes, I can do it. So people miss sometimes whenever they got the opportunity, because there are lots of good officers, there are a lot of good colleagues. They fear to join in different sessions because they fear to speak in front of the audience. But I was courageous that I feel that, yes, I want to share, I want to take the opportunity, and I want to learn from others. So this passion made me to that stage, pushed me to that stage. And I joined there and I learned from different speakers. And again, I was invited in different world cotton summits in 2016, 2017, 2018. They have invited. And the first invitation I got in 2017 by an international organization. They were going to arrange a conference in Singapore. One of the resource person invited me, hey, we are going to organize a conference. Would you like to join there as a speaker? I got that, hey, what happens? I got that spirit that, yes, I can do it. I can do it, yes. So that's the great secrets I got that from, and I got confidence. And in this year, really, I was inspired that, yes, what I have got the confidence, I want to share with, I want to convey my message to young generation, to my colleagues, to my friends, that yes, we need to transform the community. And the transformation only can happen if we have that good quality of speaker, good quality of mentor, good quality of coach. Only transformation can happen. And the second important thing I say that connectivity. That is connectivity. Only the good speakers, only mentors, only coaches, they can connect with the people. Because connectivity is very essential. If someone is not connected with the thoughts level and ideas, the changes, because they want to change, but if they are not connected with the change, they cannot transform even. So to connect the thoughts and ideas, great speakers plays a role, significant role, mentor plays significant role, and coach plays significant role to connect with the thoughts and ideas. And finally, what happens, the competency. We say the competency because the level of competency in where we are now and in which stage we need to go. That's why this festival 2020 has been arranged by Worldwide Success Academy. I appreciate yes, and that you are connecting. You are working connectivity and competency. The competency. If we don't have the competency, competent people in the community, in the organization, in the society. So what will happen? That we cannot even national level what kind of competency we have and what kind of competency we need to achieve. That is, we need to compare. And these gaps only be reduced by speakers, by great speakers, and by great mentors, by great coaches. So the transformation, connectivity, and competency, level of competency
gives a society, gives a community to different levels. As you say that as I'm working in central banks, I have observed from top level, the macroeconomic level perspective. So only the competency can reduce that gap. So we have the poverty, we have the many kinds of problem. The only competency can reduce this gap. And that competency only can be enhanced by a great speaker, by coach, by mentor, irrespective of the organization and the society. So they are actually the catalyst of transformation, I would say. That they are the catalyst of transformation. And that happens, many people say that, hey, they can contribute in different levels. In the organizational level, there are different kinds of knowledge, but why I have chosen these areas, that is personal level. The personal level is one of the key factors of personal competency, because everyone needs some very great competencies. As per Stephen Covey, he mentioned the 7 habits of highly effective people. There is 7 habits. Among the 7 habits, only 3 habits are very related to person. Very related. Be proactive, and the time management, and the big vision. So these 3 competencies at the personal level. Another 3 is a very related with the organizational level or group level. So the competency is needed not only at the organizational level, the competency is needed for personal level. The personal level competency is very powerful, because whenever the personal competency is very powerful, then they can overcome different kinds of another challenges in the organizational level. So from that perspective, I have observed that the Think and Grow His books, as my mentor and Dr. Faz Mahmoud, he just gave clue in just Mars, that is, yes, after Holy Quran, the Think and Grow His book is most powerful. It is called the Bible of personal developments. And I got that connectivity, and I am so inspired that is, yes, the faculty of creative intelligence, if anyone can develop the faculty of creative intelligence, then whatever he desires, whatever he wants to achieve, he or she can. So this power comes from our thought level. So thought becomes things. As Napoleon Hill said, that thought becomes things. So whatever I thought, so changing the thought and changing the thinking level from our just audience or people only speaker can change, only mentor can influence, only coaches, because they know the way, they close the way, they show the way, because they are the real leader. And those who know this way, that is how they can transform the one's thinking level from one level to another level. This is transformation. And from desire to reality, it's one of the key factors. That is, yes, wherever you are, as a leader, as a officer, that's not a matter. But the desire level, from vision to reality, is a transformation. And
if one knows the way how to transform from desire to reality, so that actually those things happen by the speakers, by the coaches, because by the mentors, they know how to transform, how to influence the audience to take the decision, because the speakers play the role to change audience thinking level and feeling level, how they feel. If they don't feel, they will not take action. And finally happen when the audience can take the action. That is, the action is the final and very most important stage. So somebody says, we will take the action, we listen, but we don't take the action. If anyone don't take the action, that doesn't result, that doesn't give the results, any results. We don't get the results until we take action. So in this regard, I would say that is in this regard, speakers, mentors, and coaches play the great role. Yes, finally, what inspired me, that is CKI. I just developed three words, that is to focus on why I am here today. That is, C is for communication. Communication with the resources, communication with persons, with the speakers, with the coaches, the mentor, communication with the books is very important. Communication. Communication, when we communicate, we enrich and knowledge. The K for knowledge, because without good communication, we cannot enhance our knowledge. If we don't listen, that is, we cannot communicate. If we don't read, we cannot communicate. So if we communicate, we cannot enrich our knowledge. So if we don't have the knowledge, then what happens? That I for innovation, we cannot actually innovate. And the innovation is the most important part of a company. So in this regard, in all aspects, communication, knowledge, and innovation, in all aspects, speakers, coaches, mentors play a great role. And that's why I am here to work on myself and to work for my organization, to work for my community, and to inspire around me. Because yes, this is very essential skill and one of the very powerful skill as so far I observed to really inspire people. To get inspiration is great, but to inspire people is incredible. Yes, that is it. And yes, we can do it. If we practice it, we can do it. Until and unless, if we don't practice, if we don't learn, if we don't practice and keep going, then definitely we cannot make it happen. The inspiration is part of different kinds of. Thank you so much for inviting me, and I'm hopeful that definitely I'm grateful for your invitation, and you are doing a great job. Thank you so much for my mentor and my supervisor. Yes, thank you so much. Thank you very much, MD Nazrul Islam, and it's really an honor and pleasure to have you here. And thanks for your time. I truly appreciate. I know it's quite a late there, and you have to get up every morning and do your show, which is Wake Up Bangladesh. So I wish you all the best in your journey, and feel free whenever you need any of our assistance. This whole team is for you. Thank you so much. You can count on us. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. I truly appreciate it. Thank you. All right. So thank you
You guys learned something new or not? Let me ask you that way. Raise your hand so I can see. Okay, great, great. Thank you. I appreciate that. And I mean, still we have best to come yet. And just be prepared. And before we go further, let's talk something new. I wish I would have known how little time was left. I should have put more effort into my marriage. I wish I had stayed in touch with my friends. I should have told my son I loved him. I can't believe I never did anything with my idea. Why did I always live in fear? I can't believe I never wrote my book. I really wish I had helped more people in need. Why did I choose to live so far below my potential? I wasted so much time worrying about nothing. Why did I waste so much time? Why did I let so became so beautiful? I can't believe I never At the end of your life, the things you regret most are the things left undone. Okay, welcome back. Thanks for your patience. Before I invite my next speaker, I can ask all of you, please take a 20-second silence in the memory of last week, whatever happened in Beirut, Lebanon, to pay the respect. Thank you. Thank you very much. Appreciate. My next speaker, she's from Lebanon. We have been friends for so long on Facebook, but we met only once a couple of years ago in Orlando. She's a rock star in terms of as a speaker. Entire world knows her. She's a TEDx talk. Then she is an international speaker. She's part of International Toastmasters organization, and she is so well known there. I think that she should be the president, international president, at least for them. And then she's also part of another international organization, which is John Maxwell team. And luckily, I am colleague in both these organizations with her. And we both are executive director with John Maxwell team too, as well as we are both distinguished Toastmasters. But on top of that, she is a phenomenal speaker. Although, if you would like to see in detail about herself, don't forget to join us on Sunday. We have a live show, me and Sadeha, and I will be interviewing her, and I'm going to ask really good questions so you can know about her. But at this point, thanks for joining us, Sadeha, from all the way from Lebanon and celebrating our Independence Day. Let me welcome my friend Sadeha. Thanks for joining. Thank you for joining. I'm really humbled and honored to be with you. And happy Independence Day, Pakistan. I'm so happy to be with you today. Well, let me share with you my journey towards independence. Actually, independence is a mindset. We are born into boxes. The first box is the family. The next box would be the religion. The next box would be your community. The fourth would be your country or your nationality. So the minute we are born, we are put into boxes. And if we don't free ourselves, we cannot reach our potential. And we cannot even know our purpose in life. I'm going to take you with me on a small journey. Tuesday, the 4th of August, 2020, 6 p.m., I left home, hopped into my friend's car,
and we drove towards a training I was to be facilitating. 6:07. The car was lifted up in the air and then landed back again on its 4 wheels. A deafening sound resonated within our core. It triggered buried memories. Then a huge cloud, a mushroom cloud, swallowed Beirut. It was raining glass. The streets were bloody. Even human parts fell from the sky. I couldn't but have a flashback to the Civil War. And there I was, seeing my slaughtered friend at the time, who was only 10 years old. And then I told myself, Sadiqa, you shouldn't be going there. You should lead yourself. Lead yourself and take yourself where you should be going. And then I saw Uncle George, who saved my life as a Muslim during the Civil War. And I remembered his words. They also resonated into my core on Tuesday, the 4th of August. And he always told me, when you hold God in your heart, the human he created reveals itself by serving others. And then, and only then, even your enemy becomes human. There and then, I did not really understand or comprehend his words. But after a long journey of personal growth, I really and deeply understood it. The first thing, we are on a journey of becoming humans. We are born humans with a label of human, but our journey here is to become human. And our purpose is to serve and help others. How can we achieve that? Personal growth. And when you go on a personal growth journey, your mindset becomes free. All the limiting beliefs, they planted the seed inside your brain when you were a kid. All those limiting beliefs just shatter, and you regain your independence through your personal growth. How would your country reach independence if you are not independent human beings and independent citizens? And my story goes on. It is now the 11th day after Beirut blast. If I haven't gone on that journey of personal growth, if I'm not a certified coach, trainer, speaker, and teacher by John Maxwell, I couldn't pick up myself quickly. Many people are still devastated. Many people are still in their homes. They cannot even step outside their homes. It's been 11 days now. But because of a journey of personal growth, development, and training and coaching, I know how to lead myself, because this is where leadership starts, by leading yourself. And when you lead yourself, instead of being a reservoir, you become a river that flows, in the streets of your wounded country, and you find yourself serving your people, no matter the challenges, no matter the obstacles, no matter what you face. 170 dead until now, and still counting. 5,000 injured.
300,000 homeless in just 30 seconds. 30 seconds. And all the people who have been on a journey of personal growth were just 1 hour or 2 hours after the blast in the streets, leading, calling up for volunteers, calling up for people to come together. We started cleaning the houses from the shattered glass and from the debris. And now we started offering as much comfort and food and whatever the families need. But the main thing we're offering now is psychosocial support. If not for the journey I've taken, if not for my personal experience, I couldn't offer and I couldn't serve other people. Yesterday, I assisted 2 children. One of them is 9 and the other is 5. They were in Beirut downtown when the blast occurred. Their car was completely damaged. If not for God's providence, they couldn't have been alive. But they were under shock and they refused to leave the house. I sat with them. We talked. They opened up. They shared their fear. They cried for the first time after 11 days. And they knew that it's all here. And when you see a little child of 5 and 9 grasping the idea that it's all in your head, this is where hope shines, because it's all in our head, actually. And if we do not seek that journey, if we do not develop each other, believe me, we cannot reach that potential of becoming human beings. Because when we become human beings, we find ourselves standing on one platform, the platform of being human, where no color, no race, no nationality, no religion, no political background can separate us. Can you imagine how strong we can become if we are independent as human beings? Can you imagine if we become rivers instead of reservoirs flowing on the streets? Can you imagine how many lives you can save? Can you imagine how many things you can do before you leave this planet? Well, I've chosen that independent journey a long time ago, since Uncle George taught me that I need to hold God in my heart in order to see all humans from the same perspective. And that journey was a long one, and it was a challenging one with lots of obstacles on the way. And because I knew that change is so quick, and if I do not keep up with change, I'm gonna be left out in some box on the side of the street. There's a study by Harvard University that was shared by John Maxwell in one of his latest books, Leadership. And it says that your BA and your MA and your doctorate have an expiry date. Your BA lasts for 5 years. Your MA would last for 2 years, and your doctorate would last for 2 years. Because if you go back to university and you want to do the same major, you're going to find out that the courses have changed, that the approaches have changed, that the theories have changed, that everything has changed.
How would you keep up with change if not for personal growth? And many people really confuse the concept, or two concepts actually, between spending and investing. And I'm going to share also, in this part of the world, in the Middle East, people still feel that investing in themselves is a waste of money, or they think about it as spending. But there is a huge difference. When you spend to buy something which is just materialistic, something which you might lose in an explosion. Like I told you, 300,000 lost their houses. They lost it in 30 seconds. They lost everything they had. But the investment you've done in yourself to develop yourself, you will never lose it as long as you're alive. You will never lose that. Because this investment you've made is not only for yourself, it's for your family, for your community, for your country, and it's even for the world. And it has been proven during COVID-19 how people came together over those platforms. I mean, if not for COVID, you wouldn't have seen me now in Pakistan. It brought people together on those social media platforms, on Zoom, on many other platforms. And what brought people together is the awareness that we need each other, that we need to connect each other, and also creativity. Because when you are in a crisis, human beings become creative and they find ways to connect. So for me, COVID was a very positive experience. At first, I won't hide it because I'm a very people-oriented person. I really missed this interaction, especially in face-to-face trainings. But then creativity and getting on those platforms, it was really beyond, because I had this global connection all around the world. And it's true, we are in our own bubbles, but those bubbles were connected. And it brought the world much closer. And I'm going to also give you the example of the blast we had 11 days ago. I mean, I had people, and Dr. Fazal was one of them, people from all over the world reaching out. This was just heartwarming. I felt I wasn't alone. I wasn't alone out there. Everybody around the globe just connected, whether through Zoom, whether through WhatsApp, whether through Facebook, whether through Instagram, we were all connected. But I want to close my talk for tonight with telling you that independence is a mindset. How can you become independent? Personal growth is the answer. The more you grow, the more you know yourself. And the more you dig deep into yourself, the more you know your skills, the more you know how talented, how gifted, how unique you are. And once you discover that, you're standing alone. And you're standing alone to reach out to others. And you're standing alone to serve others and help others. Happy Independence Day again. And thank you, Dr. Fazal, for having me this evening with you. Thank you very much, Sadiya, for your precious time, and especially in this situation. I truly appreciate from bottom of my heart, and I have a really great concern about all the grievances you guys are going through, but you are not away from our heart. Our prayers are with you, and we are all praying for you. And hopefully I'll see you on Sunday on my live session. Thank you very much. Thanks for joining. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, guys. Now you can see an international speaker, how they speak. And that's all about your personal growth, like she said, and personal development. Now we got still our seasoned speakers. They didn't get a chance yet. So let me welcome again
He has a little bit technical issues for a while, and he's been struggling and juggling. But let's see, now he is good to go. And let me bring him on the stage. I think that he is still fighting with his networks issue. And like I mentioned he is a upcoming rising star as a speaker, but right now he is, I think that helpless in front of technology. So I got another friend of mine and a lovely friend of mine. I mean, you all know, you have seen with me quite a few times. He's a young man. He's a rising star. He's a TV anchor. He's a coach. He's a trainer. I don't know how many hats he wears. But one thing I know, he helps people. He adds value to other people. And that's all count to me. So let me welcome a good friend of mine. You all know him, but the viewers, if you don't, you will know in a bit that how great he is as a speaker, as a coach, as a trainer, as a mentor. Please help me welcome my friend, Mr. Rizwan Rashid. Thank you, sir. Thanks for joining us. I appreciate Rizwan. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for having me on your stage and sharing with international speakers, coaches, and trainers from all over the world. And I'm truly honored and feeling privileged to be right next to you. Yeah, for our viewers, Rizwan is not in Pakistan. He's also from the other part of the world. He is from Canada. And obviously, he is one of the topmost speaker around there. And he's also a award-winning speaker. So now you're going to learn a lot of things. And let me hand over my entire stage to him. All right, it's all yours, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum और जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक पे मैं सबको आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि वो कनाडा में इंटरनेशनल फोरम पे मैं उर्दू बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू में बात करूँ। और माजरत के साथ मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ उर्दू में बात इसलिए करूँगा क्योंकि शायद ये दिलों में पहुँच सके। और मैं अपनी बात कहने से पहले चंद लम्हे के लिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अपने जहन को, अपनी आवाज को, अपने दिलों को आजादी दे दीजिए, अपने माइंड सेट को आजादी दे दीजिएगा, क्योंकि यही वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि चेंज योर माइंड सेट इज गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी। आपने कभी फरारी देखी है? जी हाँ, मैंने देखी। चंद हफ्ते पहले मैं टोरंटो डाउनटाउन की जानब जा रहा था, तो एलिजाबेथ हाईवे पे डाउनटाउन से चंद किलोमीटर से पहले एक एक्सीडेंट देखा। एक छोटी गाड़ी टोयोटा करोला सड़क पे उल्टी पड़ी हुई थी और उससे चंद कदम आगे एक लाल रंग की लशकती पशकती जो फरारी थी वो पड़ी हुई थी, जो 6 फुट 3 इंच की नॉर्मली होती है, लेकिन वो पिचक के तकरीबन 4 फुट के करीब रह गई थी। अब सोचें, ये मुझे हादसा देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपने भी हादसे देखे होंगे। तो मैंने अपना फोन निकाला, उन हादसे की तस्वीर ली और अपने फेसबुक पे डाल दी, और इस कैप्शन के साथ कि ये वो फरारी अब विद इन 30 सेकंड 0 से 60 की रफ्तार पर कभी भी नहीं जा सकेगी। अलास। उसके बाद मैं अपने काम में मशगूल हो गया। शाम को मैंने उस पे देखा तो बहुत सारे दोस्तों ने, जानने वालों ने उस पे बड़े जबरदस्त दिलचस्प रद्द अमल कमेंट्स आए थे, लेकिन वो सारे कमेंट्स पे किसी ने उस एक्सीडेंट पे नुकसान का किसी का नहीं पूछा, कि उसका किसी का अफसोस का इजहार नहीं किया। उल्टा सब ये कहने लगे कि बिल्कुल सही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी ने कहा कि ये तरीका है मुल्क में इस गाड़ी चलाने का, किसी ने कहा ये नवाबजादे ने, जो अमीरजादे ने ये पी रखी होगी, यही ज्यादा तेज चला रहा होगा। अब मैंने अपने कैप्शन में कहीं भी नहीं लिखा था कि किसका कसूर था, क्यों नहीं, कैसे ये हुआ।
یہاں یہ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ شاید امیری اور امارت کے ساتھ بڑا مبہوس ہے، تھوڑا اس کا ہیٹنس ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، لیکن بڑا ہی دلچسپ اور مزاحیہ تھا میرے لیے. اب میں اس لیے یہ بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں انٹرپرینور کوچ ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بزنس کی باتیں کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کیسے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنا کاروبار بڑھانا چاہیں گے، اپنی مارکیٹ بڑھانا چاہیں گے، اپنے پروفیشنل کو آگے لے کے جانا چاہیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کی منزلیں طے کریں اور مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اور مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں آج صرف دولت کی بات کرتا ہوں کہ کیا آپ دولت سے نفرت کر کے دولت مند بن سکتے ہیں، یا کسی چیز سے نفرت کر کے آپ اس سے پیار بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری سوچ کو محدود کرنے والی سوچ. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو نسل در نسل ہمیں ورثے میں ملی آ رہی ہے اور ہم اس سے ناواقف ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بہت متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا کی اگر میں بات کریں، وہ ایک لیبرر تھے، مزدور تھے، دہاڑی دار، انتہائی غیر معقول دہاڑی پہ کام کرنے والے، صبح سے شام تک اپنے مالکوں کے لیے خوار ہونے والے. ان کے اگر ہاتھ دیکھتے نا تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے. یہ وہ شخص تھے جن کی معاشرے میں کوئی آواز نہیں تھی، نہ کوئی انہیں سننا چاہتا تھا. بس شور مت کرو، جب کام کری جاؤ مشین کی طرح، ہمیں تمہارے کاموں سے مطلب نہیں ہے، باتوں سے مطلب نہیں ہے، صرف کام کرو. اور یہ روایت نسلوں سے چلتی آ رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میرے فادر نے میرے دادا سے، اپنے باپ سے نصیحت کی درخواست کی کہ میں کیا کام کروں، کیسے میں زندگی میں کامیاب ہوں، تو انہوں نے ایک نصیحت کی. یقیناً انہوں نے بہت اس پہ سوچا ہوگا. انہوں نے کہا میرے بیٹے ہنر حاصل کرو، کبھی بھوکے نہیں مرو گے. اور مجھے یقین ہے آپ نے یہ ایسی نصیحت یا ایسے ملتی جلتی نصیحت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ہنر حاصل کیجئے، کام سیکھیے، آپ پلمبر بن جائیے، آپ الیکٹریشین بن جائیے، آپ بینکر بن جائیے، سارے ہنر ہیں. لیکن مجھے دوسرے جملے کے دوسرے حصے پہ غور کرنا ہے کہ اگر آپ کام کریں گے، ہنر کریں گے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہنر کر کے کوئی ایسا بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسا کریں جیسے اپنے حصے کی شمع جلائیں، ایسا کریں جیسے اپنی دولت ہو کے نہ صرف اپنی خواہشات، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ملک کی پوری کرنا شروع کر دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ تاکہ تم بھوکے نہ مرو. یہ مایوسی والی سوچ. وہ کہتے ہیں نا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی دیا تم جلاتے جاتے. یہ سوچ نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور ہمارے تخیل کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہے. ہمیں کوئی نصیحت سننے اور سمجھنے میں بڑا مشکل آ جاتا ہے. ہم لگتا ہے یہ بات بالکل صحیح اور معمولی ہے، اور یہ مانتا ہوں کہ میرے دادا نے جو بات، اپنی سوچ یا جو بات کہی، وہ اپنے ذرائع آمدن کے حساب سے اپنی ذمہ داریاں پوری نبھا رہے تھے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سوچ ان کو کتنا نقصان پہنچا رہی. اب اس کو سیکنڈری پہ میں لے کے آتا ہوں. میرے فادر ماشاءاللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے سب کی سوچ بدل دی، اور اس کی وجہ اور اس کا ون آف دا ریزلٹ کہ میں آج یہاں پہ کینیڈا میں پچھلے 22 سال سے رہ کے دوسروں کی خدمت کر رہا ہوں کہ دس واز سینٹ ٹو می. لیکن میرے پاس یہ سارا میں روز یہ دیکھتا ہوں، تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. مجھے ایجوکیشن سے کوئی اعتراض نہیں، میں نے خود فارمل ایجوکیشن سیکھی ہے، لیکن مجھے ایجوکیشن سے اعتراض صرف یہ ہے کہ جب ہمارے بچے پڑھنے والے جب جاتے ہیں وہ انفارمیشن لینے جاتے ہیں، صرف وہ کیمسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے میں امتحان پاس کروں، نالج لینا نہیں جانتے. نالج نہیں لیں گے تو نالج اسکل میں کنورٹ نہیں ہوگی، اسکل کنورٹ نہیں ہوگی تو آپ کہیں بھی ہنر مند نہیں ہوں گے. ابھی ہم ہنر تک پہنچے ہیں. اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پرانی ایک فیکٹری کی عمارت دیکھی ہو تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا وہ طبل بجتا ہے، وہ ایک وسل بجتا ہے، اور صبح صبح مزدور قطار اندر قطار اس
फैक्ट्री की जानब रवां दवां हो जाते हैं। वो उनको पता होता है कि कौन से उनके डेस्क होते हैं, वहां पे बैठ के वो सारा दिन काम करना शुरू करते हैं। घंटी बजती है, वो उनका लंच टाइम हो जाता है, वो लंच करने चले जाते हैं। फिर घंटी बजती है, वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। फिर घंटी बजती है, काम खत्म, शिफ्ट खत्म, वो अपने घर को रवां दवां सर झुकाए चले जाते हैं। अब अगर इसी को अगर हम स्कूल सिस्टम में ले जाएं, ये बिल्कुल हमारी फैक्ट्री की जानब चल रहे हैं। अगेन मैं उस्ताद का बहुत एहतराम करता हूँ, एजुकेशन सिस्टम का करता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे हम पे मुसल्लत कैसे हुआ ये चीज। ऐसे ही घंटी बजती है, बच्चे स्कूल की जानब रवां दवां होते हैं। घंटी बजती है, एक पीरियड शुरू हो जाता है। वो घंटी बजती है, वो बच्चे लंच करते हैं। घंटी बजती है, वो घर आ जाते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। वो हमें एक यके बाद दीगरे हमें ट्रेन किया जा रहा है कि हम पढ़े लिखे होके एक गुलाम बने, पढ़े लिखे होके एक नौकर बने। ये सोच हमें जो है ना वो होल्ड किए हुए है। वो कहते हैं ना कि क्या बताएं साहब, क्या खा रहा है, नुमाएं कर गए, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो इसका मुतबादल क्या है, इसका व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव है कि अपनी सोच को बदल दे। वो कहते हैं ना, एक मजदूर होता है, वो सुबह दिन वो व्हील बैरो पे यहाँ पे व्हील बैरो मिलती है, वो जिसमें वो चीजें रख के लेके जाते हैं। तो व्हील बैरो में ईंटें ढो ढो के लेके जाता है। तो व्हील बैरो में जितने भी वो डालता है, 8 घंटे 10 घंटे जितने भी काम करते हो, जितने ज्यादा ईंटें ढो के आगे तक जाएगा उतने ज्यादा उसको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसी तरह वही माइंडसेट हमारे पास आता है जब हम एक नौकरी करते हैं तो हमारे कुछ बिल नहीं पे होते, कुछ जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, तो हम दूसरा काम भी शुरू कर देते हैं, शाम का जॉब शुरू कर देते हैं, हल्का सा छोटा सा और काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें और घंटे लगाने, हमें पता है और घंटे लगाएंगे कुछ और पैसा मिल जाएगा। हालांकि इसका जो द अदर फॉल्ट है कि बहसियत इंसान हमारे पास दिन में कुछ महदूद घंटे हैं, और ये दौलतमंदी का राज है कि सबसे पहले इस तीन जो व्हील बैरो, मजदूरी की व्हील बैरो में आप ईंटों के बजाय कोई ऐसी चीज डालें जिनसे आपके घंटे तो वही हों लेकिन आपका वैल्यू बढ़ जाए। अपने काम की वक़्त बढ़ाएं। 1 घंटे में काम करने, सिक्के जमा करने को तरजीह न दें बनिस्बत के आप ज्यादा उसमें से कन्वर्ट करें। अच्छा, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे जो आसान जो ये एक अगेन वन मोर बिलीफ इज दैट हमें चाहते हैं कि वो जो सोच बदलने में एक और है कि हमें हमेशा सिखाया गया मेहनत से काम करें, ज्यादा काम करें। वो यही होता है कि नौकरियों में, हमारे ऑफिस में यही होता है कि जो ज्यादा बंदा टाइम लगाता है उसको कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत पूरी दुनिया में इसमें स्मार्ट वर्क का काम हो रहा है। ये बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इस सोच को बदले। सबसे जो मुझे खुद सिखाया गया वो अनदर माइंडसेट अप्रोच है, वो है कोई खतरा मोल ना लेना। आपने सुना होगा, नौकरी करो आराम से, बहुत पुरानी बात थी, नौकरी करो और वहीं से पेंशन लेके निकल, मार कोसने सब कुछ सुन लो, वहीं पे रहना। हालांकि जो अमीर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो हर वक्त नया काम कर रहे हैं, खतरात का सामने कर रहे हैं, और जो हमारी मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो किसी खतरे का सामना ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास है वो शक के हाथों मफलूज होकर रह जाता है। वो कुछ हद तक जिंदगी में महफूज मकाम पर होता है, लिहाजा वो खतरात से डरते ही रहते हैं। और आजकल अगेन वही है कि जस्ट एक माकूल सी नौकरी बैंक में, फार्मास्यूटिकल में कहीं तलाश कर ली जाए, उसके बाद इसकी परवाह ना की जाए कि बाकी क्या कहते हैं। भाई ये अजीब सी सोच हमें डाल दी। अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो फिर सबके जैसे ही कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। तो अगर आप जिंदगी में आसान रास्ता चुनेंगे
تو اس کا مطلب ہے آپ لو انکم والا راستہ چن رہے ہیں، حالانکہ آپ بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ 2008 کی دہائی میں ہی ایسا ہی ایک کرائسس نارتھ امریکہ میں آیا، اور اسی طرح ہمیں معلوم ہوا کہ ساری دنیا لٹنے والی ہے، لیکن جن کمپنیز نے اپنے آپ کو پیوٹ کیا، اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا نیو چیزوں میں، انہی میں بہت زیادہ آگے چلی جا رہی۔ اچھا، میں صرف یہ بتا دوں کہ دولت کے بارے میں میرا خیال ہے 2-3 ابہام ہیں، وہم ہیں ہمارے ذہن میں کہ جی پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پیسہ ہر برائی کی جڑ نہیں ہے، حالانکہ کہاوت یہ ہے کہ پیسے کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کس طرح پورے گھرانے کو اس سوچ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ غلط سوچ آپ کی گٹی میں پڑ گئی تو آپ سمجھیں گے پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے، تو میں پیسہ کمانے کی دوڑ میں کیوں لگوں، اور اگر میں لگوں گا تو میں غلط راہ میں لگوں گا، اور اسی ذہنیت کے ساتھ آپ کبھی بھی وہ میں 100% نہیں جا سکتے، یو آلویز ان دا کانفلکٹ۔ دوسری بات کہ پیسے کی بات نہیں کریں، اور یہ ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا کہ پیسے کی بات گھر میں نہیں ہوتی، کہ جی میں نے کبھی نہیں اپنے فادر سے پوچھا، میری ہمت نہیں کبھی ہوئی اپنے فادر سے پوچھنے کہ آپ کی تنخواہ کتنی۔ میں آپ سب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے جو بھی ارننگ ہینڈ ان سے پوچھیں جی آپ کی تنخواہ کتنی، اس دفعہ آپ کو بونس کتنا ملا تھا، آج اگلی چھٹیاں میں آپ کتنے پیسے انویسٹ کریں، کیونکہ ہمیں بولنے کی وہ سوچ نہیں دے گی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ اچھا، اب حالانکہ جو امیر گھرانے ہوتے ہیں یہ ڈسکشن ایوری سنگل ڈے ہوتی ہے، تو آپ کیسے امیر بن سکتے ہیں جب آپ نے بچپن میں ہی، جب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی، اس وقت آپ نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی۔ تو آج سے یہ شروع کیجیے۔ ایک اور مت ہے ہمارے ذہن میں، شک ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ دولت جو ہے وہ محدود ہے، کہ بھئی اگر میں نے زیادہ کما لیا تو میرے شاید پڑوسی نہ کمائے، کہ بھئی میں نے سارے پیسے کمانے ہیں، سب نے تو کمانے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے میں نے جب پاکستان میں بینک آف امریکہ میں جاب شروع کی، میری ایک تنخواہ تھی آئی تھنک 10,000 12,000 کے قریب تھی، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ سوچیں کہ میں سمجھتا کہ جی میری 50,000 یا لاکھ یا 5 یا 10 لاکھ ہو جائے گی، تو میں سمجھتا تھا کہ سارے بینک کی تنخواہ مجھے مل جانی تھی، میری سوچ تھی۔ لیکن یہ سوچ غلط، کیونکہ جو پول آف دا منی ہیز انکریز اینڈ اٹ ول انکریز، جیسے بندوں کی پول انکریز ایسے پیسوں کی، کیونکہ دیر از نو لمیٹیشن ٹو دا ویلتھ۔ جو آپ کہیں گے کہ بھی یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کو چینج کیسے کریں، میرا پورے 8 اس کے نکات ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیلف آئیڈینٹی۔ اپنی نمائندگی کرنا سیکھیں، اپنی نمائندگی اس لیے کرنا سیکھیں کیونکہ آپ کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا آ جائے گی۔ اگین دس از اے مائنڈ سیٹ۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایک عام متوسط گھرانے کا باپ یا ماں اپنے بچے کو ایک ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتی ہے نا، تو رستے میں اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا جو ہم ڈینٹسٹ کے جا رہے ہیں، تم نے ذرا بھی تم نے رونا نہیں ہے، تم نے کوئی بات نہیں کرنی، چپ چاپ کر کے منہ کھول کے بیٹھ جانا، ہم نے بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، بہت پیسے دیے ہیں، جتنا مرضی درد ہو جسٹ چپ کر کے یہ کام ہو جانا۔ اب اس کے بنسبت اگر کوئی دولت مند اس کو اپنے بچے کو لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈینٹسٹ پہ وہ جاؤ، وہ تمہارے 2 سے 8-10 سال یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے، وہ تمہاری سروس کے لیے سیکھا ہوا ہے۔ اگر جب تمہیں درد ہو تو انہیں بتانا کہ کہاں درد ہوا ہے، اور اگر کوئی اور بھی چیز کو تم نے ان سے پوچھنی ہو تو ضرور ان سے کوشچن کرنا، یہ تمہاری سروس کے لیے۔ اب یہ دونوں سوچیں اگر دیکھیں یہ بہت ڈفرنس ہے۔ اب یہی سوچیں لے کے یہ بچے اگر جوان ہو کے 20 سال بعد آتے ہیں تو ہمیشہ ڈاکٹر انجینئر کو ماسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں،
और जबकि जो दूसरा बच्चा जिसने उसको सर्विस के तौर पे देखा कि वो मेरी सर्विस के लिए, हाउ ही विल कमांड द अदर वन। अच्छा, ये मैं इससे आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पेक्ट नहीं करें, रिस्पेक्ट जरूर करें, जितने भी प्रोफेशनल है उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन अपने माइंड सेट को उनके बराबरी में लेके आए। प्रोफेशन, पैसा कोई आपको ऊपर नहीं करता, आपकी सोच आपको ऊपर करती है। जो सबसे मजेदार जो मेरे नजदीक एक नजरिया कि आपको कैसे आगे जाएं, अभी कुछ स्पीकर्स ने ऑलरेडी इसके बारे में भी कहा है, इनोवेशन के बारे में, नए ख्यालात को जन्म दें, नए ख्यालात। जब आप नई चीजों के बारे में जानेंगे, करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन इज गोइंग टू जस्ट चेंज योर वर्ल्ड, जस्ट चेंज योर ट्रैजेक्टरी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में जितने आईटी प्रोफेशनल्स पे काम कर रहे हैं, ये बच्चे आईटीज में आ रहे हैं। जो हार्वर्ड की रिसर्च ये बताती है कि अगले 20 से 25 साल बाद बहुत ज्यादा काम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे काम हैं, इवन जो अब हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोविड-19 पे, ये एक बहुत बड़ी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी जो नासा के पास थी, आज हम हर बंदा यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके 20 साल बाद तो इससे और बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि एआई ने बहुत ज्यादा चीजों को टेक ओवर कर लेना है। तो जो इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स बहुत कम चाहिए होंगे। कौन चाहिए होंगे? जो बीए पास फिलोसोफर्स हैं, वो जो क्रिएटिव माइंड रखने वाले हैं, वो चाहिए होंगे। अगर आपके पास क्रिएटिव थॉट है, आप अपने आप को आगे ले के जा सकते हैं। आप अपने आप को सिर्फ अपने ज़हन के बंधनों से आगे लेके जाएंगे और आपको पता चलेगा कि वाओ, व्हाट अ वर्ल्ड इट इज। और इसी तरह जैसे वर्ल्ड सक्सेस ग्रुप और डॉक्टर फाज साहब काम कर रहे हैं कि ये आपको एक कोच और ट्रेनिंग के जरिए आपको अयां करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके साथ कहाँ पे मजीद, वो कहते हैं ना, आपकी आमदनी में एक जीरो मजीद ऐड कर दे। इमेजिन करें अगर आप 10,000 ले रहे हैं, एक जीरो ऐड हो जाए, उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, राइट? और वो जिंदगी बदल सकती है आपके क्रिएटिव थॉट से। वो कहते हैं ना, निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, हम जो इस माहौल से जुड़े हुए हैं, हमारी सोच, काम, दौलत कमाने के लिए हमारी काविश, हमारे ख्यालात, हमारे अंदर का जज्बा, ये सब उस माहौल के जेर असर हैं जिसने हमें होल्ड किया हुआ है। तो अपनी सोच को बदलें। मैं ये नहीं कह रहा अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को छोड़ें, लेकिन अपने आप को उस सोच से अलग करें जिसने शायद अपने आप को गरीब रखा हुआ है। अब गरीबी सिर्फ दौलत नहीं है, गरीबी हमारी फिक्र की भी गरीबी है। आपके पास, मैं इसलिए दौलत से कर रहा हूँ या मनी से कनेक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे साथ बहुत जल्दी समझ आ जाती है, बाकी चीजें हमें समझ नहीं आती। लेकिन हालांकि थिंक एंड ग्रो का रिच नजर साहब ने किया, आई एम इन लव विद दैट आइडियोलॉजी, और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन उन सब में सबसे जो टॉप बात सीखने में है, वो है आपकी नीयत, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट। और यही माइंड सेट की आज मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जहन में जो वो बात होती है, शऊर में बात होती है, वो लाशऊर में उस वक्त चली जाती है जब आपने वो रिपीटेडली बात सुनी। वो लाशऊर और अल्लाह ताला का कनेक्शन है। उस लाशऊर और अल्लाह ताला के कनेक्शन को नीयत कहते हैं। वो नीयत जो आपने दिल से की है, अगर आपने नीयत दिल से की है ना, वो कहते हैं ना कि वो किसी अमीर को, बंदे को किसी ने कहा कि आपको कब्र याद नहीं है, आप इतने गलत काम कर रहे हैं, करप्ट बंदे को। उस करप्ट ने कहा कि हाँ जी, कब्र में तो जाना ही है, मुझे भी जाना है। तो ये हमें पता तो है, लेकिन हमें ये नहीं यकीन कि हमें जाना है। तो मैं आज अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को ये बताने जा रहा हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, और अपनी सोच को बदलने के साथ अपने आप को, अपनी आईडी को, अपने आप को निखारिए। अपने आप को निखारने के लिए आपके पास वर्ल्ड सक्सेस ग्रुप है। मैं एज अ कोच, एज कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी पिछले चंद सालों से
میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو واقعی میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. اور لاسٹ میرا پوائنٹ ہے, the risky is the new safe. risky is the new safe. کیونکہ ہمیں نسل در نسل سے یہ سکھایا گیا کہ خطروں کا کھلاڑی نہیں بننا, کوئی ہیرو نہ بنو, ایک نوکری کرو, چپ چاپ کام کرو. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی خطرہ ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے کو اپنی بیوی, بچے, ماں باپ, اپنا کریئر, اپنے گھر, اپنا ہسپتال, اپنا کرایہ, سب کچھ ایک شخص سے ایک کمپنی پہ منحصر کر دیا, تو اس شخصی کا اور جس کمپنی یا اس شخص کا اولین مقصد اپنی کمپنی کی ترقی ہے, آپ کا بھلا نہیں, یہ تو انتہائی خطرے کی بات. تو اگر آپ 30 دن کی نوکری کے بعد پینشن پر گزارا کرنا چاہتے ہیں تو آپ that's where the mindset change. اپنے آپ کو ناکام ہونے کا بھی موقع دیجیے گا. آج سے اپنے آپ کو آزادی دیجیے کہ اپنے آپ کو ناکامی کے ساتھ ملائیں, اور جب آپ یہ مہربانی کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ان ناکامیوں سے, تھوڑی سی شرمندگیوں سے, تھوڑے سے نقصان کے بعد جب آپ دوبارہ اٹھیں گے تو وہی ناکامیاں آپ کی کامیابی کی سیڑھی بن جائیں. اور میں اختتام کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور happy Independence Day, and thank you very much Dr. Faz for having me in there. Thank you رضوان. اسی لیے ہم نے آپ کو آخر کے لیے رکھا تھا کہ ہمیں کچھ انسپریشن اور موٹیویشن آپ سے ملے, اور اٹ واز جسٹ اے پلیجر ٹو ہیئر یو. اینڈ آپ ویسے ہی ہمارے ایک قسم کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں مستقل, تو آپ سے یہ اس سے ہمیں فیض ملتا ہی رہتا ہے. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ رضا بھائی جو ہے وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سی نیٹ ورک کمپنی ہے, اس سے لڑ رہے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے, آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. اور ان دا مین ٹائم ہم کو جوائن کر لیا ہے ہماری ایک اور ساتھی, وہ بھی آ چکی ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ رضا بھائی چونکہ میرا خیال ہے دیکھنے والے اور سننے والے بھی بور ہو گئے ہیں, یہ بار بار ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو رضا, آر یو ریڈی؟ رضا بھائی آپ تیار ہیں؟ رضا صاحب آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, آر یو ریڈی؟ لگ رہا ہے ابھی بھی ان کا کوئی مسئلہ تو ہے, آپ کا نیٹ ورک غالباً ابھی تک صحیح نہیں ہے. رضا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اوکے, وہ پھر غائب ہو گئے. چلیں, تو ہماری ساتھی نے ہمیں جوائن کر لیا, پتہ نہیں انہوں نے پہلے کیوں نہیں رسپانس کیا, ورنہ وہ ہم انہیں پہلے سے اسکیجول پہ کر لیتے اسپیکر. مگر بہرحال یہ ان کا اپنا شو ہے, یہ آپ کی ٹیم ہے, آپ کا اپنا شو ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی میمونہ گلشن. So let me get her on the screen and let's see what her 2 sentences in this. And I believe وہ بڑی رائزنگ اسٹار ہیں, and I'm looking forward to hear her. So Memuna, stage is all. Thank you so much, Dr. Faz. It has been an absolute pleasure to be on this platform, and I'm very, very thankful to you. اور اس کووڈ کی سچویشن میں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, اور and the wonderful part of this whole few months was that I get to meet, very wonderful people on the internet, because I have been away from social media for so long because I was so occupied with the regular setup. So, I get to meet amazing people like you, Rizwan Saab, and, many others as well. جو رضوان صاحب ابھی بات کر رہے تھے, میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی
कि जो ये बराबरी के सतह पर बात करने के बारे में बता रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री विद हिम दैट आई डोंट नो व्हाई, इज इट बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग और समथिंग एल्स और द वे वी आर ब्रॉट अप, हमें बराबरी का वो इस तरह से सिखाया नहीं जाता that we are equal parts, counterparts of the other individual. So we can agree and disagree with the other party. अगर हमें कोई अच्छा लगता है, if somebody is our mentor or a coach or somebody we look up to, तो हमें उनको blindly follow नहीं करना है. हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं और हमें उनसे जो भी वो अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कुछ हमसे आगे हैं, तो इसीलिए हम उनको अच्छा जानते हैं और अच्छा उनको समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो हर बात है उसको मनो-अन तस्लीम कर लिया जाए. तो इस बात से मैं बिल्कुल आप लोगों से, रिजवान साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ that we need to have like this open mind. And also I have seen like a lot of changes in this past couple of months, not only within me but around me. I've seen people change due to this technological revolution, or I would say, because everybody was confined in their homes and there was nothing, or there was this gap कि अब क्या किया जाए. लेकिन उसमें some people were very blessed enough or fortunate enough that they they took advantage of this time and they learned something new. Every day I am learning something new, and we should not give up. Age, आपका जेंडर, आप एबल हैं, डिसेबल्ड हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, आप जो दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, जब तक आप अपनी सोच को लिबरेट नहीं करेंगे, आप जो है वो कामयाबी के रास्ते आप पर नहीं खुलेंगे. तो इंशाल्लाह आपको चाहिए कि आप अपनी सोच के दायरे को खोलें और उन लोगों से मिलें जो आपको आगे पुश करने में मदद कर सकते हैं. आप उन लोगों के साथ अपना उठना बैठना करें. जैसा कि एक बहुत ही फेमस कोट है, मैं उसको रीफ्रेज कर रही हूँ कि अगर आप अपनी कंपनी में सबसे बेस्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो कंपनी सूटेबल नहीं है. तो स्टार्ट चेंज योर कंपनी और उन लोगों में उठना बैठना अपना करें जो आपसे बेहतर हैं, ताकि वो आपको अच्छे की तरफ लेकर जाएं. और ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, इससे बाहर जरूर निकलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. आपके पास जो नहीं है उसके बारे में ना सोचें, आप अपने पोटेंशियल के बारे में सोचें कि आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में, और अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़्यादा सलाहियतों के साथ नवाजा है. तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, देखने वालों का और डॉक्टर फाज का, जिन्होंने जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब मिल बैठें और आज के दिन जो पाकिस्तान हमें मिला है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें. और ना सिर्फ जैसे बहुत सारे मेंबर्स ने भी कहा, सज्जाद ने भी अपनी, रिजवान साहब ने भी ये बात की कि जहनों की आज़ादी, सोचों से आज़ादी, सोच की आज़ादी, इस तरह जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाएं और इंशाल्लाह the world is all yours. Thank you so much. Thank you, Maimuna. It was a pleasure to have you in the last second, and I'm glad that you showed up. And it's really amazing and inspiring for all of us. May Allah bless you for everything. But अब देखता हूँ मैं, रजा भाई आ चुके हैं मैदान में, और मुझे उम्मीद है कि अब वो आखिर में
मेरी जगह लेंगे, क्योंकि फिर वो हो जाएंगे सबसे आखिरी स्पीकर, जो कि मुझे होना चाहिए। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे ख्याल है सुन सकते हैं मुझे। कैन यू हियर मी? कैन हियर यू। ओके, मैंने आपकी आप ये इको हो रहा है किस वजह? somebody hold on, why it's echo? खैर चलें, तो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो रजा भाई जो है हमारे राइजिंग स्टार, और मैंने पहले ही बताया बहुत उभरते हुए स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, टोस्ट मास्टर हैं। तो अब हम बेताब हैं उनको सुनने के लिए। इससे पहले कि नेटवर्क उन पे हमला करे, हम उनकी बातें पहले सुन लें। So please help me welcome, yes, Mr. Thank you Raza so very Khan. much. Thank you so very much, and happy Independence Day. I would like to share only 2 points over here as a speaker. And for being a good speaker, there are 2 things. 2 चीज़ों की ज़रूरत है. Let me share you first कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो असातिज़ा थे वो मुझे बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट किया करते थे। वो मुझे they used to take me like for granted कि यार आप जो है ना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। 40 लोगों में से वाहिद मैं था जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स। सुबह गुजरता गया। आफ्टर माई स्कूल आई ज्वाइन सेंट पैट्स कॉलेज, इंटरमीडिएट हुआ, देन आई ज्वाइन कराची यूनिवर्सिटी, मैंने बीकॉम किया, देन आई वेंट फॉर नमल यूनिवर्सिटी, एमए इंग्लिश मैंने किया वहाँ से। एक क्यूरियोसिटी थी इन 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 मी दैट देयर वाज अ स्पीकर विद इन कि यार मुझे ज़िंदगी में जो है वो अपने ख्यालात लोगों तक पहुँचाने हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। सो आई लर्न अबाउट टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन मैंने किया। एंड 2017 में मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। इट्स बिन 3 years and alhamdulillah I've been like I have 4 international tours as a Toastmasters and मैंने बहुत कुछ सीखा। उन लर्निंग में से आज मैं आपसे कुछ शेयर करना ये चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इफ़ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, वेदर यू आर अ टोस्ट मास्टर्स और नॉट, बट ये 2 एलिमेंट अगर इन 2 एलिमेंट पर अगर आप अमल करेंगे सो यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर, you will be a great master, you will be a good speaker. You can speak in front of the audience fearlessly. Point number 1, लोग ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि ख्वाब देखना अच्छी चीज़ है, कामयाबी और नाकामी के लिए हमें जिस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, that's called your vision of success. The vision of success is actually momentum. Momentum is a speed you use to get your vision of success or you get your goal. तो जिंदगी में जो आपका गोल है वो मोमेंटम में रहते हुए आप हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड इट टेक्स 40 मिनट्स, तो मैं मुस्तकिल 40 मिनट्स तक अगर सही डायरेक्शन में ड्राइव करूंगा सो आई विल गेट द प्लेस। अगर मैं 40 मिनट्स गलत डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ ड्राइव करूंगा, कॉन्स्टेंटली ड्राइव करूंगा, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ड्राइव करूंगा, तो मैं अपने मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाऊंगा। सो 2 चीज़ें वो क्या हैं जिसकी वजह से हम अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 1 इज फियर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर। अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप देखें, हर शख्स आपको डराने में लगा हुआ। वेन डायर की बड़ी अच्छी अमेरिकन राइटर हैं वेन डायर, उनकी बुक का नाम है पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग। उसमें एक चैप्टर है जिसमें वो फेयर के बारे में बताते हैं कि भाई फेयर जो है वो आपकी इनप्रोबेबिलिटी होती है, वो आपके अंदर की एक ऐसी आवाज़ होती है, आपके एक अंदर की आवाज़ होती है। एक्चुअली यू कैन नॉट सी दैट, आप उसको देख नहीं सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता फेयर। फिर डेल कार्नेगी कहते हैं कि जनाब फेयर जो है वो सिर्फ माइंड में होता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि जनाब इफ यू हैव फेयर ऑफ एनीथिंग सो डू दैट वर्क ट्वाइस अ डे। अगर मुझे स्पीकिंग से खौफ आता है तो मुझे दिन में 2 मरतबा स्पीकिंग करनी चाहिए। अगर मुझे खाना बनाने का खौफ है सो आई मस्ट कुक ट्वाइस अ डे। इफ आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग आई मस्ट ड्राइव ट्वाइस अ डे। तो वो काम आप 2 मरतबा दिन में करें अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा। सो दुनिया जो है वो खौफ से भरी हुई है और लोग आपके अंदर वो वायरस डाल रहे हैं।
So as a student, when I was in school, मेरे teachers, मेरे fellows, my family members, my area mates, everybody I was there, I was living in, सब मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे. Point number two. Point number two is feeling poor. Poverty. Poverty does not mean कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है. Poverty means like you feel poor. You say to yourself that I cannot do this. I cannot speak. I cannot face the audience. I cannot do so and so. Feeling poor. So take a look around yourself. The world is full of people who give you these viruses. आपको जब ये viruses मिलते हैं, you lose your momentum. When you lose your momentum, you become stationary. And you become stationary, you get procrastinated. And when you get procrastinated, you just kill your time, you are just burnt out. You are out of the game. So momentum is very important. How can you get that momentum? You can get the momentum by changing your atmosphere, by changing your environment. Make a list of people that from where I'm just getting that virus. From people on my Facebook, from people on my LinkedIn account, from people in my area, from people in my relatives. Just have a distance with them. Take a distance with them. Maintain a distance with them. Sit in the gathering. The people give you encouragement. The people deal with you with zeal. The people give you that bonanza, that is spark, the momentum, so that you can achieve your vision of success. I am Raza Khan. I want to be a world speaker, world champion of public speaking. But these days I'm working hard. Why? Because these days I'm getting motivation from my friends. I've changed my atmosphere. So in my school life, I was not able to speak. I was less confident. As soon as I changed my atmosphere, I get up myself. I travel around the world. I joined Toastmasters. And finally, I've met a person called Dr. Faz in person when he visited Pakistan last year. So now everybody has problems, but some people love to live with the problem. As a Pakistani here, we have internet issues, we have electricity issues, but even though I've been speaking since morning, and I would like to share one good point. The teacher used to curse me in my school, in my class. In 2014, I was conducting a teacher's training in Air National Conference. I saw that teacher sitting in my training room. She ignored me. I went near to her, say, ma'am, you remember me? I am Raza Khan from that school. You used to curse me. You used to say to me that, Raza, you cannot do anything in your life. Mark my words. I am that person. Thank you so very much for demotivating me, my dear teacher. Sachin Tendulkar said that if someone gives you demotivation, if someone throws stones at you, just save them and make those stones to your milestone. I took those cursive statements, I took those negative vibes from my teacher, and I turned them into my milestone. So now I'm speaking in front of you in English, even in Urdu, but as I was a student in grade 8, in grade 9, I was unable to speak even a single word in Urdu. So thank you very much to my teachers who always demotivated me. Just because of them, I'm highly motivated. So only two things, feeling poverty and fear. You can remove these two elements to get your momentum, to get a spark, so that you can be a great speaker. Finally, you need to change your atmosphere. If you cannot find a good atmosphere around you, join people on Facebook, join Dr. Fazl, join most of the people are doing such a great thing on internet. Just join them, change yourself, take yourself to the next level, and kindle the name of your country, your parents, and
make the world better place. Over to you, sir. Thank you so much. Raza, finally, I got a chance to hear you again. And I believe you have to mute your... Hello? Yeah. Yes, sir. Yeah, because I don't know why it's echoing. So anyway, thank you very much. I appreciate and hope we wish you all the best. And I can see behind you a book from Darren Tay, Express to Impress. Darren Tay He's a friend of mine. Manoj Vasudevan. He's a very good friend of mine. Yes. The Power of Words. Katani. Manoj. You can see all and these Darren with me. Tay. And three books I have taken in person from these world champions. Yeah, Manoj, he was very gracious when I stopped by in Singapore. He took me out for dinner and we spent like 7-8 hours together, and I did all the shopping with him. 7-8 hours together, and I did all the shopping with him. All right. Yeah, he's a good friend of mine, and I had an. So I was looking at that book. Yeah, Darren Tay. Thank you, appreciate it, and we'll continue. So मेरा ख्याल है अब आप सब लोग मुझे सुनने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग थक चुके होंगे और खासा लंबा हो गया है. तो मैं मुख्तसर बात करता हूँ, ताकि वैसे वही है कि इस स्कूल का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया. तो वो वाली बात है मेरी. तो बहरहाल इट्स ओके, आई मीन आप हमें तो सुनते ही रहते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है. लेकिन बहुत खूबसूरत तकारीर हुई और बड़े अच्छे दोस्तों ने ख्यालात के इज़हार किए. ख़ास तौर पे यानी आपने देखा हमारे वो मुकर्रीन जो बैरून मुल्क से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इतनी दूर से, कुछ न कुछ हमने उनसे सीखा. रिजवान भाई, सदेहा और ऑब्वियसली एमटी नजरुल इस्लाम, रज़ा खान, सब ने, और सज्जाद भाई ने भी बहुत खूबसूरत बात की, सफ़िया आपने. तो हमने कुछ ना कुछ सबसे सीखा, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो हर चीज़ जानता है, लेकिन हर शख्स कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है. तो हमें कलेक्टिवली ही सीखने को मिलता है. और बड़े खूबसूरत से ख्यालात का इज़हार किया गया. जैसे अभी रज़ा भाई ने कहा कि जो चीज़ें आपको ख्याल आना चाहिए कि एक तो गुर्बत के इस खौल से बाहर आ जाएं, खौफ से. दूसरा आपने कहा जो खौफ है उससे बाहर आना. तो देखें भाई, जो लोग मुझे जानते हैं, the people who heard me so many times, I am an advocate for prosperity. I am totally and entirely against the poverty. God didn't create me to become a poor person. God didn't create me to be a failure. I mean, failure could be a milestone for my success, but I'm not born to die as a failure. So I'm here, I'm a winner, I'm not quitter. So don't quit, keep fighting, keep working. Every failure takes you another step towards your success. Just keep in mind, fail forward, don't fail backward. So every failure is going to move another step towards success. Mediocrity, गुर्बत, ये वो चीजें हैं अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया. हम वो रूह हैं जिसे अल्लाह ताला ने लामहदूद जहानत देकर जिस्म की शक्ल में इस दुनिया में उतारा है, और फिर उसके साथ साथ अपना पैगाम दे दिया कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने तुम्हें पैदा ही खूबसूरत किया और मुकम्मल किया है. तो आपको क्या हक पहुंचता है कि खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत तख्लीक को आप खराब करें? आपने उसने आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दे दिया. क्यों दिया? इसलिए कि उसने आप में अपना इमेज बनाया है, यानी वो ताकतें दी हैं जो अल्लाह अपने पास रखता है, उसमें से कुछ चीजें आपको भी साथ साथ दे के भेजा इस दुनिया में. बाकिया तमाम मखलूक के पास वो नहीं है. फरिश्ते हैं, जिन हैं, सब दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनके पास जिस्म नहीं है. क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. दुनिया के तमाम चरिंद परिंद, तमाम जानवर इस दुनिया में मिलियंस और बिलियंस की तादाद में है, उन्हें जिस्म दिया है तो अक्ल नहीं दी.
آپ خالی صرف اور صرف وہ مخلوق ہیں جس میں روح بھی ہے، جسم بھی ہے اور عقل بھی ہے. تو عقل کا استعمال کرنا شروع کیجیے. جسم اور روح خود بخود اس کے الائنمنٹ میں آ جائے گی اگر عقل کا استعمال کریں. اور عقل کا استعمال کیا ہے؟ جیسے کہ رضا صاحب نے بھی کہا اور دوسرے دوستوں نے بھی، کہ یہ جو خوف ہے، دنیا میں دو ہی وے ہیں جینے کے، دنیا میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں جینے کے. یا ایک طرف آپ کے پاس خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے آپ اپنے فیتھ کو بڑھاتے جائیں گے، فیئرز کم ہوتے چلے جائیں گے. خوف خود بخود، آپ ہر خوف پہ قابو پا لیں گے تو اپنے ایمان کو بھی مضبوط کیجیے. سب سے بڑا طریقہ جو خوف پہ قابو پانے کا ہے وہ اپنے ایمان کو مستحکم کر لیجیے، مکمل کر لیجیے. اس کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ غربت اور میڈیاکریٹی کو خدا را سوچنا بند کر دیں. اللہ تعالی نے بحیثیت مسلمان کے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی بنیادی شرائط میں کیا ہیں؟ وہ 5 اراکین. ذرا غور کیجیے. پہلا ہے کلمہ. جب تک وہ آپ نہیں پڑھتے آپ مسلمان نہیں ہوتے. اس کے بعد نماز، یعنی 5 وقت اس خدا سے جا کر 10 بستہ آپ اس سے کچھ نہیں مانگتے، حاضری دیتے ہیں اس کے حضور میں. تیسرا اس نے کہا کہ روزہ رکھیے اپنی تزکیہ نفس کے لیے. اب یہ تینوں پہلی چیزیں تو اللہ نے اپنے لیے مانگی نا. چوتھی چیز کیا بتائیے آپ کو؟ کبھی غور کیجئے بحیثیت مسلمان کے. چوتھی چیز اس نے کہا کہ زکوٰۃ دے. تو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ غریب تو نہیں دے سکتا نا، آپ کو دینی. اس کا مطلب آپ پر فرض ہے. یہ ان 5 اراکین میں ایک شامل ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے تاکہ آپ یہ رکن بھی اپنے مسلم ہونے کا پورا کریں. تو مجھے بتائیے کہ آپ کو مذہب کہاں روکتا ہے غربت سے نکلنے سے؟ امارت کا تو درس دیا گیا ہے ہمیں کہ آپ کمائیں تاکہ آپ زکوٰۃ دینے کے اہل ہو سکے، قابل ہو سکے. حج پھر اس کے بعد ہے کہ پھر اگر آپ صاحب حیثیت بن جاتے ہیں اس تمام باتوں کے بعد بھی تو پھر آپ کیجیے، اور وہ بھی ایک بار کرنا ہے زندگی میں. لیکن زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی ہے. اور کون دیتا ہے؟ جو پیسے کماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سبق 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے دے دیا ہے. اب اس پر ہم غیر ضروری لمبی لمبی تقریریں تو کر سکتے ہیں کہ کیوں غربت اچھی ہے یا بری ہے. یہ سب بکواس ہے. آپ کیوں ایوریج ہوں گے بھائی؟ آپ کو ایوریج بنایا ہی نہیں ہے، آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو آپ ایوریج کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ Why you want to be worst of the best and best of the worst؟ جیسا میں کہتا ہوں، be the best whatever God gave you. آپ کے اندر، آپ کی ذات میں بھی، میں نے بتایا ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک مائیکل جارڈن چھپا ہوا ہے. آپ کی ذات میں بھی ایک ٹائیگر وڈ چھپا ہوا ہے. آپ کی ذات میں ہی ایک بل گیٹ بھی چھپا ہوا ہے. آپ کی ذات میں ہی ایک مارک زکربرگ بھی ہے. آپ کی ذات میں ہی ایک عبدالستار ایدھی بھی ہے. تو وہ کہاں سو رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں دریافت کرتے؟ دریافت کیجئے اپنے آپ سے کے اندر، اور جب آپ اسے پالیں گے تو آپ دیکھیں گے زندگی بہت خوبصورت بھی ہو جائے گی اور آسان بھی. وہ ایک خوبصورت اقبال کا شعر مجھے اس بات پر یاد آ رہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کیا کچھ دیا ہے. آپ اپنے آپ کو ریویل کیجئے، اپنے رازوں کو آشکار کیجئے، اپنی ذات کو دریافت کیجئے، خود دریافت کیجئے. آج کووڈ 19 کے بعد جو بھی حالات ہیں وہ دنیا یکسر بدل چکی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی کووڈ 19 نے آپ کو ایسی پورے گروہ کے گروہ نکل کر آ گئے میدان میں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. 6 اسپیکرز ہیں، کوچز ہیں، ٹرینرز ہیں. یہ وہ کاندھے ہیں جس پر آپ پریشانی کے عالم میں اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں، تو کاندھے بھی اللہ نے ساتھ ساتھ دے دیے. آئیے ہم سب آپ کے لیے موجود ہیں. آئیے ہم مل کر آپ کو، آپ کا ہاتھ تھام کر اس مصیبت اور مشکل کے وقت میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو اس سے نکال لیں.
कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला जब भी कोई बुरा वक्त देता है उसके साथ साथ बहुत सी अच्छे मुस्तकबिल की भी निशानियां साथ साथ क्रिएट कर देता है। इस कोविड-19 ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया है। आज मैं और आप मुखातिब हैं तो ये भी उसी की दी हुई एक अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर मैं चाहता हूं कि हम सब अहद करें कि 14 अगस्त 1947 को जिस तरह हमने गोरों से आज़ादी हासिल की थी, इस 14 अगस्त 2020 को हम चोरों से आज़ादी हासिल करें, गुलामी से आज़ादी हासिल करें, कसमपुरसी से आज़ादी हासिल करें। हम अपने आप की ग्रोथ करें, हम आगे बढ़ें, हम उन तमाम खौफ और ख़तरे जो हमारे जहनों में बैठा दिए गए हम उनको अनलर्न कर दें, हम उनको भूल जाएं, उनको निकालें जहन से, और आज की नए पाकिस्तान की, डिजिटल पाकिस्तान की, जिसमें हर शख्स को आज़ादी हो, एक छोटी सी डिवाइस के जरिए वो तमाम जुल्म का मुकाबला कर सकता हो। एक 10 सेकंड की वायरल वीडियो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले जुल्म को पूरी दुनिया पे आश्कार कर देती है। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं अपने तमाम आबादी पाकिस्तान की जहां जहां भी गरीब हो या कम पढ़े लिखे हो उन तक पहुंचकर उन्हें इस चीज से आशना करा सकते हैं। आइए सब मिलकर एक अहद करते हैं एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। कुछ टेक्निकल खामियां तो रही होंगी, लेकिन चूंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कुछ न कुछ आप सबको सीखने को ज़रूर मिला होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं उसका मुंतज़िर रहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।